ग्रुप पे शेयर कर दो यार कोई अभी। करता हूँ। वहाँ पे ठंड हुआ है क्या अभी तक? हाँ यार बिल्कुल। थोड़ा तो है। इधर तो 0 है भाई, एसी चला के बैठे। ओके वी आर You, लाइव। you, भरत where are you? मुंबई ना? I am in Pune. You can also tell our Pune viewers है now क्या? where you are, Himanshu, in case they're थोड़ा तो new. है। I'm in Assam, Nice. गुवाहाटी। Uh, मैकडॉनल्ड्स कल खुल रहे हैं यहाँ पे। तो पहली बार ना एक्साइटमेंट हाँ। हो रहा है लोगों को। पूरा क्या मंगाया कल, क्या लोग फोटो मंगाएगा? भेज रहे मैकालू हैं। टिक्की या क्या मंगाएगा तू? एक मैक पिज्जा, क्या बोलते हैं, मैक पफ। पिज्जा मैक पफ, वो अभी भी बनता है क्या? आई हाँ, होप। मुझे कभी 25 पसंद रुपए नहीं का आया आता वो। है। वो मुझे जब अच्छा भी लगता खाते हो था। तो जल जाता है जी। हाँ ना, गरम करके दे दे रहे एकदम। और बाहर से एकदम ठंडा सा रहता है, लगता है कि Oh कुछ नहीं fuck, है I अंदर। accidentally disliked our stream. ये नाइस, ऑन गोल कर दिया आपने। हाँ हम्म। बंगाली बना भोपाली। Anyway, चलो। Okay, and we're back. Episode 85 of the DissContent podcast. After a very long time, कोई टाइम नहीं है, बहुत सारी मूवी है, तो फटाफट पॉइंट पे आते हैं. And I'm Aditya Khanna. With me is Bharat Misra, Bharat, हेलो हेलो। and Himanshu Arya. हाय गाइस। तो वी आर बैक ऑन द पॉडकास्ट, और अब से हम हर हफ्ते आपके सामने आएंगे टू टॉक अबाउट वेरियस कंटेंट एंड मूवीज एंड all the bullshit of the world that we watch in order to keep ourselves from dying. So chalo, with that we can start with, there is a lot of stuff to discuss, various amount of things. I think we're going to be touching upon an action hero. यस। कला कला तुम दोनों ने देखी, मैं नहीं देखी. And Monica or my darling, and if there is anything else also then we can. ऊंचाई की बात करनी थी हिमांशु को बहुत ही बुरी तरह, तो पता नहीं मैं उसकी भी बात कर सकते हैं. वैसे ऊंचाई का एक मैं बेटर स्टार्ट करूँ नाम हो ऊंचाई के सकता बारे था. में? हाँ हाँ बोल बोल। यू आई जस्ट वांट टू लाइक आस्क, किसी ने देखा है? तुम लोगों ने देखा ऊंचाई? नहीं भाई, मैं अब नहीं तक मैं पेंशन पे नहीं जी रहा हूँ, तो मैं नहीं देखी वो मूवी अभी. भाई उस मूवी का ना एक बहुत बड़ा मतलब ट्रिप है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ना, आई टेल यू व्हाट द फक, अमिताभ बच्चन डिडंट गो टू एनी आउटडोर लोकेशन टू शूट. Yeah. No outdoor locations, and the whole film is about climbing the Everest. And बाकी सब जन गए, पूरी पलटन, मतलब 20-25 लोग एक्टर्स है, 20-25 लोग, जिसमें ना यंग पीपल आर NPCs, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स or whatever, and only Boman Irani and this guy Anupam Kher, and then there is one more old, like a veteran actress, I'm forgetting her name. These three people are there, मीना। and Nina Gupta is not one of them. नो Okay. यू She, टॉकिंग अबाउट एस से जिसका नाम है, जो हाँ, भेजा फ्राई में रजत कपूर की वाइफ थी. आई सरिका डोंट नो. सरिका Sarika, सारिका, yeah. हाँ हाँ. By the way, Sarika is positioned in the movie as someone who's quote unquote hot. It's a weird one. This Okay, movie is a weird. moving on from that It's a one. weird. हाँ. So the film has very casual sexism. Very casual. You know, ladies थोड़ी Mount कैजुअल Everest चढ़. सेक्सिज्म राइट और हाँ, सेक्स। sexism. कैजुअल सेक्सिज्म। Because I'm Very just casual. imagining what casual sex are Bhavan Irani, Anupam Kher and Amitabh Bachchan having. I don't think if the three of them have sex with each other, it can ever be casual. You know, I think it will Intense cause. होगा. अमिताभ बच्चन casual नहीं करता कुछ. हाँ. Intense देता Hi. है. Do you think he Every also performance. moans like that? Do you think he also moans like? आई डोंट वांट टू थिंक। एनीवे। But every performance na Amitabh Bachchan does the same now. Huh? It's like he is KBC ka Amitabh Bachchan, he is Hamming. But he was good in Jhund, but it's the same thing, right? Jhund में भी उसने वही किया था, but the story was good, so it worked. Now the thing is, Amitabh Bachchan didn't go to the location. So the whole thing is, Bhuvan Irani and Anupam Kher are like acting stupid and crazy, and then there's a cut away to Amitabh Bachchan looking at them and just making a face. Just that. मस्ट बी फन। पीछे ग्रीन स्क्रीन है, दिखता है, ठीक है, पूरा ग्रीन स्क्रीन है. और इतने सारे शूट हुए हैं, इतने सारे लोकेशन जिसमें अमिताभ बच्चन के ऊपर ना बहुत फोकस है, एंड ही इज नॉट देयर एट द लोकेशन, सो ही इज टॉकिंग, पीछे ग्रीन स्क्रीन, कट टू देम, दे आर एट द रियल लोकेशन.
इतना weird है ना, इतना weird है, you can't adjust to this. मतलब शॉट काउंटर शॉट में एक साइड Green screen है. महबूब स्टूडियो हाँ. एक साइड भाई एवरेस्ट भाई उधर ही उसके घर का नाम क्या है, जूम है, उस उधर ही लगा दिया होगा एक ग्रीन स्क्रीन एक जलसा कमरे में। जो भी वो गया ही नहीं है भाई. अभिषेक को उसका बोला होगा outdoor तू घर shots से नहीं बाहर है. निकल, और उसके रूम में ग्रीन स्क्रीन लगा दिया। हो सकता है भाई. और उसके अलावा ना, I'll tell you, there are some very trippy and dark shots. हाँ. Suddenly in the movie, which is a very nice family, like a Piku kind of a family entertainer road movie, suddenly na it gets dark as hell and like super psychological thriller, and the tone changes. And हाँ, बीच में तो इतना dark, and I feel like, you know, it's very, I feel like the subject matter is very close to the director's heart, because he's talking about a broken marriage or whatever, and it Okay. feels like वो अपने बारे में बता रहा है, क्योंकि the lead character ना भाई अमिताभ एक बच्चन है. सेकंड, सूरज बरजात्या हम साथ साथ बनाते बनाते डिवोर्स हो गया उसका, I don't यही know तो का। क्या Okay. हुआ उसका पता नहीं. डिवोर्स है क्या? मुझे नहीं, but मुझे it's explained in the movie. I'll tell you what happened in the film, not what happened in real life. I don't know. Amitabh Bachchan is a very famous writer, author, and when he became popular by writing his books, his marriage fell apart because he couldn't accept her in public life, so she left him, and then she went into depression. So this story arc na is one of the main arcs of the story, where suddenly Amitabh Bachchan na, when he gets like Alzheimer attacks on top of Mount Everest, okay, and he's like looking for his wife with a torch in the snow at night. Oh, It goes damn. shit dark, okay, suddenly, and he's like, मेरी wife इधर ही कहीं थी, आपने इनको but देखा all क्या? of this is happening in his room. Yeah, it's actually, but you can tell कि ये वो है, मतलब green हाँ। screen है, but यार dark हो जाता है बीच में 2 बार या 3 बार, काफी मतलब heavy हो जाता है, but everything wraps up well in the. That's all. I just wanted to say that. ऊंचाई ना, there's some, मतलब it's all कुछ चल रहा है, कुछ weird चल रहा है. देखोगे तो it'll be funny also if you want to have a trip, I guess. भाई काफी हिट हो गई वैसे मूवी। There's nothing to really shit on except for like the fucking sexism, you know, the यार ladies लोग थोड़ी चलते हैं हिमालय, you know, Mount Everest, you know, like सॉरी that kind लेडीज of लोग क्या? they keep hamming this कि, you know, they don't want to tell their wives that they're going for a Mount Everest trek because ladies allow नहीं करेंगी, what they use it like ladies will not let us go for यार ये mountaineering. लेडीज भी ना यार, अब क्या Yeah, बताऊं, वैसा exactly. टाइप। हाँ। And Nina Gupta is the ladies, you know, so she's been given the worst role of her life by far. She's the worst ladies ever because she just keeps shouting at everybody. She's angry at everything and whatever, some bullshit. Just, Dude, she has a very is she opposite Amitabh Bachchan in this film? no, Okay. but she's opposite Boman Irani. She's Boman Irani's wife, but throughout the film, Amitabh Bachchan is flirting with her. Oh. No, he यार ये didn't know. समधी वाला Amitabh didn't know the camera was rolling at that point. That was just him talking to her generally. It's a part of the plot that he is more charming and Boman Irani is not. It's part of the plot. So, and then Sarita which comes is and believable. it's a joke. But then Sarita comes in the car. She Sarika. shares the car, Sarika, and Boman Irani starts being very charming to her. So Nina Gupta gets thoda, you know, jealous, and then she says, how dare you, कोई और ladies, पराई ladies के साथ तुम जाओगे? You know, Nepal or whatever, Bhutan. भूटान या नेपाल में ही है ना माउंट एवरेस्ट तो। वो लोग काठमांडू जाते हैं नेपाल में. हाँ. ये पहली बात तो ये चढ़ते हैं कि नहीं एवरेस्ट? कोई मरता है? Bro, Everest climbing is the montage part of the end. भाई the whole movie is called ऊंचाई. हाँ, मुझे लगा कि most of it will be about the hard trek. The hard trek is one like couple of songs, 2 songs and one hard sequence की, मतलब तूफान आ गया, एक bridge cross करना है, bridge हिल रहा है, and that's the hard part. Once they cross it, they reach there at the final. So ऊंचाई part, the climbing part is very less. I think that's because Amitabh didn't go to that location, so they couldn't. So most of it is the road trip. By the way, I have to address the chat because before the Hobbit जो भरत का फैन है वो अब सारी हदें पार कर रहा है. उसने लिखा है हे भरत in the chat.
भाई 2 और लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबको हाय बोलना चाहिए, कोई तमीज है आपको? मतलब ऐसे बुरा नहीं फील कराता है यार लोगों को. एंड बट ही हैज आल्सो सेड एन एक्शन हीरो वाज सो मच फन, which Yeah. if you are done with critiquing the senior Yeah. citizen quota movie of the year, Bharat, did you watch ऊंचाई? तूने नहीं I देखी ना? didn't. No, I Hmm. didn't. तो I which wanted movie to. do we want to talk about now? An action hero और कला और मोनिका मेडल? I think we should get the others out of the way and then talk about action hero, because I think all of us हाँ are in unanimity on that. हाँ, we are not unanimous on Monica my darling. I know that for a fact. Yeah, we are quite far from Far, unanimous. yeah, very far. I also, acha, before we go into the movies, I Hmm. also think we should do a non-spoiler review. I mean, talk about Kala and Action Hero, because they're recently released. कला का तो Uh, definitely, because I haven't watched it. हाँ, But action hero कला का का. भी we should do like a non-spoiler thing. I agree. पर हाँ, तो we can then start with Monica my darling, I guess. Directed Yeah. by Vasan Bala, also written by him. And भरत और मेरे को पता नहीं हिमांशु का क्या व्यू पॉइंट है. भरत का तो let's start with Bharat. Bharat, what do you think of the movie? So I mean, I've also collected my thoughts on it because there's been a gap since I watched it. मुझे तो यार काफी interesting story लगी थी, and that doesn't come as a surprise because it is based on a book or a short story, one of those by Higashino, right? The writer of Devotion of Suspect X, जिसको चोरी करके इन्होंने दृश्यम बना लिया. दृश्यम बनाई है. हाँ. हाँ, जो कि अब एक्चुअल रीमेक हो रही है by the way by सुजॉय घोष, which doesn't make sense to me because उसका main plot is दृश्यम. तो अभी थोड़ा weird हो जाएगा, but I really like the story. I like the idea. और हम ये spoiler के साथ कर सकते हैं, right? We're doing this with spoilers, I hope. Yeah, Monica my darling का we're doing with spoiler. So yeah. Like I really liked. I'll tell you what I liked first, so that's out of the way. I liked how the story talks about insiders and outsiders, and it talks about how the outsiders always want a way in. It's again the same thing as the Sudhir Mishra film, right? Ki, while you fuckers were trying to get out, I was trying to find a way in, and that's the same case with Rajkumar Rao's character. He's your typical outsider in the system. He's an IIT graduate, I believe, and he's trying to break into this corporate structure. तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी. And he wants to be perceived as different from the outsiders. He said, मैं biker हूँ, मैं ये सब काम नहीं करता. Remember all of those things. So I liked those touches. Bharat liked those touches. We liked Bharat's internet's touch on his face. तो anyway, जब तक भरत आता है, हिमांशु तेरे को क्या लगा मूवी के बारे में? कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी. पर भरत वेलकम टू द DissContent पॉडकास्ट, एपिसोड 85 कर रहे हैं हम तक यही हाल चल रहा है. चलो एनीवे, हिमांशु क्या लगा तेरे को, क्या लगा मूवी के बारे में? In parts it was funny. I like the funny bits. I think well acted was the main thing that came out of it. भरत तो निकल गया यार. नहीं आ गया, वापस आ गया. हाँ, कंप्लीट कर अपना फटाफट. नहीं, मैं बस यही कह रहा था, वही सब अच्छा ही था, अच्छा लगा मुझे फिल्म में. बाकी तो यार बहुत ही pretentious kind of filmmaking लगी मुझे, and just trying to be cool and weird because you can be kind of a thing, especially with that Naidu character. वो फालतू के लाइंस बोल रही है कि मैं इतनी सुंदर तो क्या करूं मैं, and all that outdated लग रहा था ना, outdated humor, क्योंकि वो meme जा चुका है. हाँ, and it's like why नहीं, how अरे यार, this is not funny, this is first draft funny. Okay, ये मैं भी लिख चुका हूँ. We all as writers, we write things that we find funny, but when you narrate it to two people beyond you, you can see the joke falling apart in the eyes of the person who's listening to you. तो वो चीज मुझे बड़ी strikingly bad लगी. I think this deserved a better rewrite, just in terms of dialogues, not even in terms of story. The story is there, the plot points are there, the beats are there. It just seemed to me to be directed in a very quirky, weird way, which did not appeal to me. Matlab, anything, even how a simple scene is staged. How, for example, a person comes on stage to collect an award and their girlfriend comes to greet them on the fucking dais.
लाइक अरे तुम्हें अवार्ड जीत गया मुझे बताया नहीं. एंड इट्स लाइक stating everything, like it's a weird way of telling a story. Also, the use of songs and slow motion after a point for me was exhausting, क्योंकि मैं समझ गया भाई तुम क्या कह रहे हो. मैं समझ, I understand your story, I understand the plot point that you're driving. So after a point it seemed to me just style over substance, and I was waiting for the movie to, हाँ भाई आगे बढ़ाओ, समझ गया मैंने बात. Also, most of all, it was predictable, क्योंकि and I think the filmmakers were trying to be slightly clever with the fact कि हम midway point में ही आपको बता देंगे कि villain कौन है, या फिर at least hint दे देंगे. But then they did not do anything with it. Like in Badlapur, for example, or even in Johnny Gaddar, आपको मालूम है starting से कि कौन murderer है, कौन perpetrator है, क्या है. But the film derives thrills from other things. It derives thrills from when will this guy get caught? How will this guy get caught? Will he ever get caught? Here, there is no such benefit to knowing who the killer is. It's just told to you randomly. मुझे ये चीजें problematic लगी इस फिल्म के बारे में. But yeah. ओके तो आई जस्ट हाँ हिमांशु तू न्यूज़ पैनलिस्ट जैसा वो मत कर, तू बोल दे जो बोलने का. I agree with some of your points. I disagree with some. I feel like hook. You're right about कि hook ही नहीं था. Like even if you know who the killer is, doesn't matter because that information doesn't help. So that hook wasn't there. I agree. The film has no hook. But then the direction, the way it's been, like the way the slow motion and the music and stuff has been done, I think that was the saving grace of the film. Because I watched it through because of that. मुझे वो लगा कि it pulled me in or kept me there because the music was fun and it was all like dramatic, adding drama to the basic stuff. So that is why I felt like as a director, Vasant Bala did his thing. He tried his best to get his film rolling. Maybe like some things click with, like objectively, it's subjective, right? You might like it, you might not like it. Yeah. But I'll tell you what I hated. The fucking story. There's nothing to it. It's khali, hollow as fuck. That is what I found problematic. Why don't you have a good main character? Yeah. Why is Rajkumar Rao so deela? He's a very good actor. Nah? Give him some proper stuff to do. Give other people. Other people are really crazy good. I think Rajkumar Rao had nothing to do except for his backstory being कि he is this and that. तो What do you guys think? या नहीं तो मैं तो वाइल्डली डिसएग्री करता हूँ अबाउट 95% ऑफ पॉइंट्स है. आई थिंक आई डू अग्री. जो स्टेज वाला सीन मुझे बहुत अजीब लगा था. आई डू थिंक कि जो डायलॉग का जो इशू है, व्हिच इज you are right in your examples also that you gave of Sriram Raghavan, and Sriram Raghavan is somewhere associated in this movie. Some shit is going on there also, I don't know, but I think they did sort of attempt something that Sriram Raghavan has mastered in a sense, which is, for example, that shot in Badlapur of Tabu's red hands coming at the back with that music of the 90s का कि murder हो गया वाला music, और वो सब उसको श्रीराम रावण के वो जहन में, मतलब उसको बहुत अच्छे से वो करने को आता है. दे ट्राइड दिस हियर, डिडंट ऑलवेज वर्क फॉर श्योर. वो स्टेज जैसे थोड़े बहुत डायलॉग्स आई एग्री आर अ लिटिल बिट, बट जो तू बात कर रहा है मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट फीलिंग आया इसमें कि वो जो तू बोल रहा है ना, एज स्क्रीन राइटर्स वो जो हम दो लोग को स्क्रिप्ट दिखाते हैं ना, तो वो नॉर्मली ऑल्सो स्क्रीन राइटर्स होते हैं, ठीक है, या ऑल्सो इन द इंडस्ट्री या पीपल हु हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स. और मेरे हिसाब से अ लॉट ऑफ टाइम्स दोस पीपल आर राइट एंड गुड, but a lot of times those people fuck your vision up and they get their own shit bias to it. And I think this time that is what I think why I love the movie, because it really screamed a lot of passion to me, a lot of clear voice to me. I do think that Vasant Bala is, and I haven't liked much of his writing work per se. I've seen Peddlers, which is not out yet. मैंने मामी पे देखी थी, मुझे ठीक लगी थी. But I really enjoyed मर्द कुदर नहीं होता, which I think भरत तेरे को वो भी कुछ खास नहीं लगी थी ना? नहीं अच्छी, I liked it way more than this because it was an action film and the action was good. Yeah, but I liked मर्द कुदर नहीं होता overall. I loved the vibe and the style. And जो तू बोल रहा है ना, जो cool and pretentious वाला, वो मैं सबसे ज्यादा disagree करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से
यार अभी कोई अगर कूल है तो है, मतलब आई थिंक द हु डिसाइड्स दिस कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी कूल, आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस व्हेन समवन इज ट्राइंग टू बी कूल. वो इसमें या फाइन दे पुटिंग मूवी रेफरेंसेस, दे आर डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग, पर वो अगर आप उसका मूवी हिस्ट्री देखो, वो जो भी उसने काम किया, जितना भी किया है, वो वैसा है, वो इंसान वैसा है, तो अभी उसकी वॉइस वैसी ही होगी, आई फील. हाँ, तो तो then maybe हाँ the thing is, you're right. It's very subjective then, and I don't like his voice. हाँ That's the ऐसे answer. तो फिर हाँ, तो नहीं, What but do I say? no, तो Yeah, नहीं, why I am saying this is Yeah. कि I think there is a lot in this movie which is which I I think a lot of people, when you try to analyze it too much, because at the end of the day they have shaped it up to be a dumb thriller comedy kind of a movie, which, and I agree with you on that point also, that it's predictable as fuck, because the moment that Modi looking boss came into the frame, I'm like, हाँ correct, ये बंदा main है, he is the big bad villain at the end. तो वो सब चीजें काफी obvious, but I do think that I liked it much better than Dobara, and a lot. Also, to be very frank, मुझे 95% of बॉलीवुड मूवीज बहुत ही घटिया लगती हैं. तो मैं जब ये देखी तो मुझे लगा कि चलो यार, कोई अटेम्प्ट कर रहा है, कोई थोड़ी बहुत ट्राई मार रहा है, एंड इट्स फॉर मी इट सक्सीडेड. एज ही सेड, इट्स सब्जेक्टिव, बट आई डू थिंक दैट आई लव टू सी कि कोई मतलब अगर मूवी रेफरेंस डाल भी रहा है तो उसने थोड़ी बहुत मेहनत की हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल, it's not ham, at least the movie references, a lot of the parts of the movie are ham. यार, I but mean, like for क्या example, effort है? हाँ, बोल. नहीं, फॉर एग्जांपल द शाइनिंग का वो कारपेट था ऊपर, तो इट्स नॉट लाइक इट्स फॉर एवरीबॉडी, like if somebody who hasn't watched Shining will not, it's not like कि उस पे साला zoom in किया है और वो सब है, it's just there in the background. Apart from that, even the characterization, वो नायडू वाला I agree, थोड़ा सा annoying, okay, थोड़ा सा annoying था वो, but I think as the movie kept going, I started to warm up more to that character and all the other characters, and I think it created a rich world for me. Whether it is Sukant Goel's character, the village, I loved the cutaway I loved that scene of Rajkumar Rao when he focuses on something and he recites some mantra. Oh, that was Yeah. a great scene. That Yeah, one yeah. scene was amazing. I like those bits in the movie here and there. So I enjoyed it largely. इसका भाई ये बंदा सिकंदर खेर क्या मस्त काम किया अरे वो, बहुत funny. भाई. And also I, as someone who as English speaking people, we like, हमने ज्यादा बराबर से अंग्रेजी बोलने वाले लोग नहीं देखे हैं स्क्रीन पे. सब लोग पता नहीं क्यों घटिया बोलते हैं, ऑफ स्क्रीन मस्त बोल लेते हैं, ऑन स्क्रीन पता नहीं उनको क्या कोई शॉट मार देता है. पर इसने क्या मस्त किया है यार, मतलब वो बोल भी रहे फक ऑफ, तो मैं ऐसे लोग को मिल चुका हूं जो ऐसे ही बात करते हैं, मतलब उनको तमीज नहीं, मतलब वो पूरा वाइब वो मस्त आया मुझे. तो मुझे तो बहुत फनी लगी, मुझे बहुत जगह पे काफी लाफ आउट लाउड टाइप भी लगा, तो आई एंजॉय. अब जैसे रेफरेंसेस की बात करें ना, रेफरेंसेस जैसे ओ माय कजिन विनी कॉल्ड, भैया मैं ऐसे 50 रेफरेंस अपनी स्क्रिप्ट में फेंक दूं, मतलब दिस इज जीरो एफर्ट रेफरेंसिंग, राइट? कि यार ये तो ऐसे तो एज स्क्रीन राइटर तो हम लोग बोल सकते ये तो मैं कारपेट नहीं, भी पैर लगा दूं, मतलब वो तो एट द एंड ऑफ द डे तो वो इट्स जस्ट अबाउट थिंकिंग अबाउट इट. but it doesn't serve anything else. It serves nothing. It's just a lazy reference, right? It's like मतलब क्या बोले, अभी किसी का नाम श्रीराम और किसी का राघवन कर दूं और उनको साथ में बोलूं श्रीराम राघवन, मतलब my point is that kind of referencing seems very, it does नहीं, nothing. आई थिंक नहीं, I'll tell you what, using my cousin Vinny, ठीक है, तो मतलब it's like any of these are still relatively obscure things. तो I feel like again वो अगर किसी के पेरेंट्स देखेंगे उनको नहीं पता होगा ये मतलब उसका कजिन है विनी, ठीक है, बट it is for film lover, it is for you भरत मिश्रा, it is for you. पर तूने उसको कचरे में फेंक दिया, तूने बोला ये तो मैं 2 सेकंड में लिख के दे दूं और फिर मेरा प्रोड्यूसर मेरे को लात मार के बोलेगा. मतलब इसके ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं फिल्म को कि वो अरे यार क्या क्लेवर फिल्म मेकिंग है, देखो क्या क्या मस्त हिडन रेफरेंसेस It's made by a fan of cinema. That's what people are calling it. That's Which what all the reviews were. fair enough, Bharat. उतना मतलब don't put somebody on pedestal for saying this, you know. भाई You need to judge the movie for the movie also. भाई ट्विटर पे सोमेन मिश्रा वगैरह लिख रहे हैं
कि oh these are the list of references, what a great job you've done Vasanwala. हाँ उतना मत जाओ, पर तो मूवी को मूवी की सोमेन, तरह देखो. हाँ ठीक है, पर वो तो किसी ने उठा के वो किया. तो आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन विद दिस, योर अनॉयंस विद आराम नगर, दैट इज नहीं डिफरेंट. मैं वो तो नहीं, I would have still been हाँ. fine with it had I enjoyed the film myself. I would be like fuck it, hire ले कुछ 10-15 लोग कुछ भी तो आप कर रहे हैं ट्विटर पे, मुझे क्या फर्क पड़ता है. हाँ. पर the film didn't work for me. The film was like okay fine. मुझे Nice. फिल्म का ना फिलोसफी मेरे को ये लगा कि they are basically fighting for, it's a clickbait, they are fighting for your click, and the competition is YouTube. That's why it feels like a sketch more than a thing. And the direction is की careless direction है, like it's they are not taking Carefree. themselves seriously, intentionally non-serious vibe है, which makes it a sketch. And when there are like YouTube sketches get like clicks, right, people share it and stuff, so the engagement rises. And I feel like the film is one big YouTube sketch, like a intentional one. Yeah, It's 100%. like an SNL sketch intentionally done so that you keep getting engaged. And they've put engagement and not relatability, I think, but engagement over everything else. Which अब Netflix का जो thumbnail size है और YouTube का thumbnail size है वो same ही है. तो आज के डेट में तुम्हें करना पड़ेगा. अगर कोई स्मार्ट फिल्म मेकर है वो लाइन पे फॉर्मेट क्या समझ रहा बात है. बोल दी, क्या बात है, क्या बात क्या है. मतलब वो है. सुना आपने, YouTube और YouTube Netflix और- का जो थंबनेल है वो सेम है. Same है. वाह इरशाद. भाई नहीं, कमेंट्स देख तो लो, सीजे हाँ सीजे कमेंट्स में बहुत. देख रहा हूँ, बट मैं एक हाँ. चीज और बोलना चाह रहा था कि यार एक मेरे को ये चीज, अगर मैं अनकूल बन के, ठीक है, अगर मैं अनकूल लोगों के कोट एंड कोट अनकूल द अनवॉश्ड मासेस के लिए अगर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ तो मैं एक्सेप्टेबल हो जाता हूँ. जैसे अगर मैं साला शाहरुख खान के मुंह पे 10 करोड़ रुपए मार के उसको अपनी मूवी में दिखाता हूँ फॉर 1 सेकेंड लाइक इन लाल सिंह चड्ढा, विच आई एंजॉयड, तो दैट बिकम्स एंजॉयबल. No, but that's not enjoyable. No. पर वो The चल ठीक है, enjoy, फॉरेस्ट गम का वो है, बट आई एम सेइंग इन जनरल not even that. तो भाड़े पे ले ही आते हैं ना एक दूसरे की मूवी में. जैसे But एक्शन हीरो में अक्षय कुमार है, ओके इट इज, आई एम जस्ट सेइंग कि Okay. वो इसके पास सिर्फ बेचारे के पास पैसे नहीं है ना, वो लेके आए जैकी चैन को, इसका भी मन करे भाई, वो भी लेके आए. both of those cameos are clever as fuck. By the हम्म. way, भाई शाहरुख खान का एक्शन हीरो main वाला तो step, बहुत ही सेक्सी था, वो वो तो तो बहुत अलग ही ही सही लेवल था. पे था. पर इवन हाँ. इसका भी मैं कहूंगा कि लाल सिंह चड्ढा का भी हाउ दे वोवन इट इनटू द स्टोरी, कि वो एक बच्चा था, वो ये डांस करता था, इसको सब गालियां देते थे, बट ये बंदे ने उसको कॉपी करके अपना स्टाइल यार बना दिया. भरत पता नहीं, मैं शायद उसको अपनी स्क्रिप्ट में 2 साइड में लिख दूं. पर नहीं, आई एग्री, आई नो व्हाट यू आर सेइंग. माई कजिन विनी से तो थोड़ा टाइम, हाँ. ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें लिखने में. करेक्ट. पर हाँ, मार्केटियर हिमांशु बाय द वे मिस्टर बिंग हैज सेड, एंड ही हैज आल्सो सेड चूतिया फिल्म लगा मेरे को भी. मुझे भी लग रहा है कि जितने भी लोग, ये पता है क्या, ये थोड़ा रिवर्स हो रहा है. आई टेल यू, ये जो जितने भी लोग फिल्म को चाहते हैं ना, मतलब जो लोग क्रेजी जो सिनेफाइल है, वसंत बाला ने उनको केटर करने की कोशिश की और वो लोग सब गाली दे रहे हैं. और जो लोग नॉर्मली उतना मे बी नहीं देखते, उन लोग को बहुत सही लग रही है, क्योंकि आउटसाइड ऑफ मे बी आवर सर्कल आई हैव ओनली हर्ड गुड थिंग्स about the movie, like everyone sort of having fun that way. It is यार of course बेसिक better फनी than है, your. फनी हाँ. तो है अपने उसके, मतलब इट्स कंटिन्यूअसली एंगेजिंग, इफ नॉट, एंड मतलब मे बी नॉट एवरी जोक लैंड, बट देन हाँ up until the end they are still trying their level best to give you a twist or give you something to hold on to. तो ठीक है, like there you'll take what you get now, because there are no great filmmakers that you look up to anymore, so you have to wait for some good ones. And I feel like I want to promote somebody who will, matlab, a decent enough filmmaker who can get good, हिमांशु आ रहे. नहीं वसंत बाला को मैं बोल, I've हाँ actually, हाँ. in fact I've met him. He used to come to Phantom ka office and I've met him, I've spoken to him. I feel like when you speak to him you'll also be like a little bit more like he gets it, he's with us, so you would want I'm to sure promote him. यार, वो अच्छा ही आदमी होगा. मैं कोई By the गाली way, the थोड़ा दे रहा हूँ best उसे. Vasan Bala joke in the world has been cracked on this podcast. It's not on YouTube. It's on Spotify. भरत, तुझे पता है ये जोक, तू और मैं थे एक एपिसोड में, और क्या हम हुआ? तभी अनुराग कश्यप ने कुछ तो गवर्नमेंट के साथ पंगे लिए थे, हम उसके बारे में बात कर रहे थे, एंड वन ऑफ अस हैड सेड समथिंग टू द इफेक्ट ऑफ कि यार अनुराग कश्यप के पास सिक्योरिटी भी नहीं है, एंड ही सेड हाँ इट्स ओनली वसन वाला. तो प्लीज गो लिसन टू आवर ओल्डर एपिसोड्स.
so that you get that situational humor very nicely. No. पर हाँ, तो I तो felt this about the movie, but yeah, अभी और क्या है? म्यूजिक के बारे में यार, तुम लोग को जमैकन वाला वसेपुर टाइप सॉन्ग अच्छा नहीं लगा क्या? कौन सा गाना था वो, भूल भी गया. I hate you so much, I love you so much, I want to kill you. हाँ अच्छा था वो. Sequence. अच्छा And dude, okay, one more that sequence reference. was मुझे good. तमाशा वाला रेफरेंस बहुत फनी लगा, मैं पागल हो गया हंस के. कौन सा भाई वो ऐसा टॉप एंगल है जब ये हुमा कुरैशी एंड राजकुमार राव आर लाइक फाइटिंग, एंड देन द टॉप एंगल ऑफ ऐसा वो टेबल पे लेटे हुए हैं. हाँ. Also, याद है. भाई सबसे बड़ी सस्पिशियस चीज वासन वाला के बारे में ये है कि तमाशा इज वन ऑफ हिज फेवरेट फिल्म्स. क्या? तमाशा इज वन ऑफ हिज फेवरेट फिल्म्स. वसन बाला की? हाँ सच्ची? हाँ भाई. चलो तो फिर मैं अभी से भरत के टीम में मेरे को बहुत ही घटिया लगी है फिल्म अभी से. ये कौन तमाशा? चलो ओके, कोई बात नहीं. सह लेंगे थोड़ा. हाँ कुछ नहीं. हंसदे चेहरे तो मतलब बेसिक. बट yeah, let's move, unless we have anything else on Monica or my darling, we can move on. भाई कुछ लोगों ने कमेंट्स डाले हैं, अगर पढ़ना है तो. क्या डाला है? पढ़ना कुछ पढ़, तेरे को अच्छा. कई लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. अविनाश कह रहे हैं द फिल्म मेकिंग इन मोनिका और माय डार्लिंग इज टू एक्सेसिव एंड हिटिंग इट ओवर द हेड, एज हॉलो एज गहराइयां. हाँ नहीं, स्टोरी तो हॉलो है, पर वो उसका नाम गहराइयां नहीं है. गहराइयां का नाम डीप था और स्टोरी बहुत बेसिक. यहाँ पर बहुत ही ऑब्वियस है कि बेसिक मर्डर प्लॉट. I'll tell you when it becomes very obvious that it's a light movie where it's not about the plot anymore. मुझे लगा कि the whole film will be about how they managed to kill her and dump the body, and the whole film will be about the night, and that would be the thriller aspect of it. But that shit went by quite quickly, and then it became about whatever happened later. So a thriller would be ki they kill her, how they kill her, and then how they dispose the body, and all the three whatever the elements of ek kill, ek transport, ek dispose, whatever. I thought that would be the movie. It's set up like that. मुझे लगा इतना heavy है. The moment they got off with it, it was obvious that it's a joke. मतलब all of it is a joke. They didn't take it seriously. Then after that, I was like, ठीक है. If it's funny, then go for it. Make it funny only. Yeah. And if the snakes and all that was funny, I guess, the last scene. But I didn't like the cliffhanger. The ending. हाँ बहुत annoying. That sucks. बहुत annoying. There was no need भाई for. उधर ये स्टूडेंट फिल्म साबित हो गई. मतलब at that point even I got very annoyed कि भाई ये क्या है, इधर क्यों एंड किया तूने? Complete वो the सांप film वाले पॉइंट पे ना. हाँ वो तो रैंडम. But if you imagine one scene ahead, it ends on Rajkumar Rao's face, right? They could have maybe extended it a bit and gone to that young version of Rajkumar Rao where he's doing his he's thing. Focusing. Yeah, and that joke could be extended. Maybe it would be funnier, but they didn't. That would be funnier. Like उसका खाली एक shot of the बच्चा only of the whole. फिर उधर से. Funny enough, right? Much Joke better. enough, but then it ends on a cliffhanger of two snakes. Doesn't make sense. I don't care. मार दो यार राजकुमार राव को, उसने क्या ही कर लिया. हाँ, it's like तुमने सारे लूप बंद कर दिए, फिर इसको मस्ती के लिए मार दिया. वो मुझे ऐसा लगा. तुमने सारे लूप क्लोज कर दिए जितने भी तुमने बनाए थे, और फिर वो सब मतलब. एंड हाँ, वो प्रेडिक्टेबल वाला एंगल भी है. But yeah, otherwise I enjoy it, apart from all these criticisms. It's one of those movies that you can watch with a group of people also. हाँ, it is that movie. It is meant, I think it is TV meant पे to लगाओ, be that vibe. TV पे लगाओ, फैमिली के साथ भी देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी, and it is मतलब जोकी, like funny. ताकि But a lot of films are not like random that. people cracking better jokes with better timing randomly, वैसा टाइप का माहौल. तो okay, we can move on to another movie now. कला की बात कर लेते. Let's just get it out of the way. कला की बात करो. मेरे को कोई आइडिया नहीं है. बाबिल खान की एक्टिंग कैसी है? हाँ मैंने देखी है ना, कला देखी पूरी. Babil Khan was a non-entity in the film for me. Because he didn't make any mark. Like he is what Irfan was originally accused of, which was like having a one note acting. वो वही है उसका.
But I was looking for something, like I was looking for Irfan, I think, in Babil's acting. That's a little And unfair also, I think, on yeah, this guy मतलब मैं ये नहीं specifically. बोल रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता उसको, क्योंकि Hmm. उसको कुछ करने को मिला नहीं, उसको बहुत लिमिटेड टाइम पे, इट्स अ कैमियो, दिस थिंग इज अ कैमियो Oh. काइंड ऑफ, तो Yeah. लिमिटेड टाइम में ना उसको मतलब ही हैड टू डू अ लॉट. आई जस्ट थॉट कि अगर इरफान होता उसके जगह तो मतलब इट वुड हैव रियली been that impactful. Hmm. That role was kind of written for him. It felt like, because it's a guy who comes and changes everybody's life and Hold on, perspective. 1 second. What is Kala about exactly? मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा. I'll tell you. Let me think. Wait. So it's about this girl, Kala, who is a decent singer, not bad, but her भाई स्पॉइल mother मत करियो. is. स्पॉइल नहीं, एक सेकंड भारत तू बता. हिमांशु बहुत बार ऐसे अनविटिंगली भाई मैं स्पॉइल एकदम करता है. ऊपर ऊपर से बताता हूँ. इट्स बेसिकली द स्टोरी ऑफ दिस यंग काइंड ऑफ टैलेंटेड सिंगर एंड हर अब्यूसिव रिलेशनशिप विद हर मदर, जो कि उसको एक साइड पे फोर्स भी कर रही है और दूसरे साइड पे उसकी मतलब मारती रहती है कि तुझे कुछ नहीं आता, तुझे आती, यू कांट सिंग, तू यू हैव अ फक ऑल वॉइस. Not my सो tempo. yeah, not my tempo, and this is set in the Bollywood of yesteryears, like 50s and 60s. No, Oh. no, no. So Pre-independence है, क्योंकि नेहरू जी. like हाँ नहीं यार, एक सेकेंड, इट इज splitting between Nehru ji हाँ. era and Indira ji era. So there is references to India's first female photographer, जिन्होंने इंदिरा जी की बड़ी अच्छी तस्वीर ली थी. So इंदिरा जी एंड ऑल, बट हाँ. जो उसमें ही बोलती है, उसमें ही ऐसे कुछ बोलती है. Anyway, point being कि ये सब था. And yeah, so this is the मोटा मोटा story. The Sorry, spoiler I have free. a joke. Indira Ji, Indira Gaddar. This is another reference to a Shriram Raghavan movie. Anyway, हाँ मैंने कल जॉनी रात को ही जी, देखी जॉनी गद्दार. जॉनी हाँ, तो भाई बहुत सही. Anyway, तो sorry, 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 हाँ sorry, sorry, sorry. बोल Sorry for all these rude But if Shriram Raghavan would have directed Monica Oma Darling, it would be a fucking masterpiece, I think. अगर वो same script लेके वो अपना कुछ twist डालता उसमें बहुत मस्त होता. Anyway. तो इसमें काफी सारे वो है ना, काफी रूमर्स हैं जो मैंने सुनाई है थोड़ी सी. वो ये कि श्रीराम राघवन ओरिजिनली वाज पार्ट ऑफ द राइटिंग टीम एंड ही वाज वांटिंग टू मेक इट, बट ही कुडंट क्रैक इट, so he kind of put it aside and maybe Vasan Wala got involved and then he produced it. So Shriram Raghavan co-produced the movie there. So that is the inside story. Going back to Kala. Sorry. Why is it called Kala with a Q is one of the questions. I don't know, but they make a joke about it. They make a joke about pronunciation of how ye wala ka nahi, ye wala ka. So it's like a Urdu ka. Like I think it comes from deeper down. The epiglottis. The epiglottis, the ka. I don't know how to say it. So, but I think that's the reason. And yeah, it's a very, I mean, I liked the film. I don't know how Himanshu thought of it, what he thought of it. I liked it. I really it's liked a- Kala. हाँ, बहुत ही मूडी फिल्म है, कुछ ज्यादा होता नहीं है फिल्म में. बट व्हाट आई रियली लाइक इज कि उन्होंने कैसे दो तीन चीजें करी. एक तो ये कि उन्होंने एक पीरियड फिल्म बनाई इन अ वेरी सीमिंगली लो बजट एंड देव डन इट रियली स्मार्टली. मतलब उस एरा को कैसे दिखाएं विदाउट साउंडिंग फेक और लुकिंग फेक एंड येट नॉट गोइंग ओवर बजट. तो एक भी आई थिंक आउटडोर शॉट्स है ही नहीं. तुम्हें जैसे वो कलकत्ता में है तो कहीं कलकत्ता दिखेगा ही नहीं. सिर्फ एक शॉट में मुझे लगता है when she's walking down the streets and is hounded by like a fucking Which is paparazzi. मतलब very easy to do. Like You कहीं भी हो nothing. सकता है. हाँ. They really did. I noticed this, Period film में, I'll tell you best thing about period films is if you hire non-actors now or actors who are new, debut, like that हाँ. period film sells because that person looks like she lived in that era. कोई Yeah. आज अगर तुम शाहरुख खान को अशोका में डालते हो तो वो सेल नहीं होता. Correct. या आमिर खान in what is that? What? मंगल मंगल पांडे. पांडे. मंगल पांडे. थोड़ा But इन्हीं का लगान आमिर में तो खान. हाँ. लगान में भी. लगान पे he was quite like he was not Amir Khan in Lagan for sure. He did his best to merge. I want to see Salman Khan in a proper period film where he's playing a real guy. वीर में वो असली बंदा नहीं है ना, वो तो Just है वो. हाँ Random है just. हाँ random story. Actually नहीं, I think वीर भी they would have started out making a movie on a real guy,
but Salman would just do whatever the fuck he wanted to do. So they were like कि इसको जो बन रहा है बना दो, इसको fictional बोल दो basically. भाई बीच by the way, में ग्लैडिएटर आ जाता है वीर में, तुम लोग देख ग्लैडिएटर के साथ साथ यूरोप, मतलब he goes to Huh? London to yeah. study, Okay. goes to And work and all, and then he comes back. मतलब it's going between a period which is almost 2000 years back, because gladiator वाला जो movies is set up in like 0 AD, and from that kind of a period to London 1945, you know, like that he's going from that to that. That is From the scale 0 of, नहीं, AD. ऐसा नहीं है, like मतलब Colosseum वाला जो उसमें scene है gladiator का, that is a 2000 year old thing, right? So अरे Veer नहीं has नहीं like gladiator scenes. The हाँ. movie, it has gladiator scenes, which if you place it, if I just show you that scene, you'll place it as a gladiator movie वाला scene. Christian era basically you're saying. वो ऐसा Pre लगता है पर वो है नहीं, मतलब पर वो वो है randomly नहीं, jump पर हो वो रहा है. 18th सेंचुरी हाँ. है। हम्म. एंड उसमें वो basically. बाहर जाके जो फॉरेनर को पटाता है वो जरीन खान वो एक से उस- जहीर खान है. फास्ट बोल. जहीर खान नहीं, जरीन खान। जरीन जरीन खान खान, कौन है? द जहीर लुक खान लाइक, को पटाता है बाहर जाके. द जहीर द खान लॉर्ड लुक से बॉलिंग कर रहा है, ये इंग्लैंड में आके उसको इंटरप्ट. पटा। हाँ. भाई वो जरीन खान इज द लुक लाइक ऑफ कटरीना कैफ, whom he at one point This was guy really has an issue, man. इसने पहले भी तेरे को पता है नेहा लकी फिल्म में उसने he got ऐश्वर्या राय look alike. to And I play a was one of the 17 or 8 16 people year who old. watched that movie actually. Even I have watched it. हाँ. मैंने भी बहुत ही देखा घटिया मूवी है वो. हाँ. And it has a 17 or 18, 16 year old schoolgirl falling in love with this like clearly adult Yeah. Salman Very Khan. old man. Very but अच्छा, कला कला कला. भाई हाँ. कला में सबसे बेस्ट चीज है अमित सियाल. if he's an actor whom I don't know if you guys know, Aditya, I don't think you know, but if you see his face you will recognize him. He's in a lot of web series. Amit Sial, भाई बहुत सी एक्टिंग की है उसने. He's played this kind of sleazy producer guy and he's really done it well. Like he steals the scenes basically. खन्ना खन्ना कह रहा हूँ, हिमांशु, what do you think about the movie? So यार मूवी तो मेरे को, I really liked it. It was a good hook, and I'm listening to the songs every day. मैं पूरा एल्बम ही सुन लेता हूँ हर दिन, because like whatever you play it, you start from the start, you can listen to all the songs in one go. Yeah. It's very easy to listen to. So मैं तो सुन रहा हूँ and I'm into it. I think couple of problems that I found was that, you know, if they show you something na, it's smart, and then they tell you again and it's stupid. It sounds, suddenly it becomes stupid. Like they tell you ki, you know, Babil ka character is getting more importance. I won't go into spoilers, but they show it to you. He is getting more importance from the public, but then they tell it to you again because Kala is asking, "Acha wo ladka hai isliye," which makes it so shit na. Like it brings down the whole value of the movie, because it was not supposed to. If she didn't ask it, it was anyway understood. And Understood. I found that every scene ending with her saying "अच्छा क्योंकि वो लड़का है," या you know, giving a sort of a explainer, one line explainer of the scene is fucking up the whole movie. And it happens at least 3 to 4 times. And those scenes are very good until that one sentence comes and it's like, bhai, editor could have removed it and it would have been fine. That's what my idea was. Now, I agree. apart from that, I feel like I was sold because these actors are new. I've not seen them before much, except for Swastika. Even she sells it very well. You know, you don't. Yeah, she does really well. She does really well, and even the actor that you named, they're really good. Okay, and non-actors on debut actors or whatever, new people, na, when they are in a period movie, they sell it better because you Yeah. know they kind of take. You feel like they do belong there. But I feel like Tripti was acting like she is mentally unstable, not unstable. That's that you were very quickly going into spoiler territory. ठीक है, So, I won't go there. हिमांशु हर नहीं. एपिसोड जब स्पॉइलर नहीं कर रहा, वो थोड़ा स्पॉइलर देता है और मैं उसको बोलता हूँ अच्छा अभी स्पॉइलर हो गया, बोलता है अच्छा चलो ठीक है फिर अभी बात कर ही लेते हैं. ठीक है, नहीं बोलूंगा फिर, क्या बोलूं. भाई वो है नहीं, लेकिन उसकी एक्टिंग, she's acting fucking dyslexic. ठीक है. ईशान And अवस्थी. हाँ, ईशान अवस्थी. I genuinely like
the person, because of her interviews and all, she really sounds like a good head over the shoulders, and I'm sure her struggle has been fucking huge because she's a complete outsider. But I just did not connect with her performance. It was, हाँ यार, in my इंटरव्यूज opinion, तो मुझे जैकी श्रॉफ के बहुत पसंद आते हैं, पर मैं स्क्रीन पे उतना वो मैं देख नहीं, नहीं मैं ज्यादा सिंपैथेटिक हूँ क्योंकि एक तो शी हैज कम फ्रॉम द वेब स्पेस, तो मैं भी वेब स्पेस का ही हूँ। तो कल को कोई मेरी राइटिंग को भी ट्रैश करे तो मैं चाहूंगा कि प्रीफेस लगाए। बट पॉइंट बीइंग कि I know that the struggle will have been hard and she's still struggling to sort of make her mark. आप देख लो जितने भी interviews वगैरह आए हैं, she has never been given the same kind of importance that a Babil is. And Babil has less than a fourth of her role. And he's Correct. been given like all the spotlight because, oh my God, Irfan Khan का बेटा है। लेकिन तो उस सेंस से मैं कह रहा हूँ कि I can sympathize with that and I understand her struggle. But as a performance मुझे बिल्कुल hit नहीं किया, and I think that's my bigger problem with the film. Intellectually बहुत अच्छी फिल्म है. You can really get the point that it's trying to make there's an actual point that it's trying to make. Like it's deriving horror from a specific thing. जैसे कि तुम हेरिडिटरी देखते हो या कोई ऐसी फिल्म देखते हो जहाँ पे तुम समझते हो ना, you get it. Oh, it follows is trying to talk about sexual. Oh, by the way, that reminds me, did you guys watch Barbarian finally? No यार, I have नहीं यार, नहीं देखा मैंने। अच्छा, नहीं। तो वो पॉइंट तुम समझ जाते हो इंटेलेक्चुअली, बट आई एम नेवर इमोशनली इन्वेस्टेड इन द फिल्म. इट डजंट मूव मी. दैट इज व्हाट आई फाउंड. तो थोड़ा सा मुझे वो प्रॉब्लम लगी थी. लाइक इन द एंड देयर इज लाइक there's an event which changes everything, like which is like it changes everything and it's supposed to have an emotional impact but it doesn't. तो वो एक मुझे प्रॉब्लम थी कला के साथ. And I think now we can move on because you've not watched it. Yeah, I think एक we have लास्ट to पॉइंट come to the बोलूं main event. हाँ, बताओ. तो if I have to summarize Kala in one line without spoiling, it's basically कला का कितना फॉल्ट है और कितना किसी और का फॉल्ट है is the question. That's what I thought. That's what I left when I finished the movie. कि how much agency or how much is her fault in her life का problems. And I felt like the way Tripti acted made it look like कला का fault नहीं है या Spoiler, ये spoiler है क्या? नहीं, it's not. It's basically it's a very मतलब बहुत fine idea है. मतलब it might be it might not make sense to anybody else, but ऐसा हुआ कि the way she acted ना, she kind of removed agency of her own character. Which made the film flat, which is a very मतलब I think expecting it from her was also not a good idea. Like expecting her to do something. भाई हाँ, yeah. Okay. चलो तो let's move on also because मैंने देखी नहीं, हमने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो I'm assuming जिसने नहीं देखी है उसको भी शायद थोड़ा struggle नहीं आएगा. हाँ. But we can say whether to watch it or not. Himanshu, would you recommend it to anybody? हाँ, ये important है. क्या चीज? कला? तू recommend करेगा कि नहीं कला in life? Definitely. Yeah, Okay. You should definitely Bharat watch it. also It's liked beautiful it, to so watch. Do check it out. By the way, just addressing everybody, please पहली बात तो like कर दो stream को. I think 13 likes हैं, खाली 19 लोग हैं यहाँ पर. Please like the stream. Also, if you can read the chat, you can see next to Mr. Pink and Avinash there is a star because they are members and they are supporting us to do the podcast. And if you'd like us to continue doing this and do it regularly, then do become members. There's a join button. You can also choose to give us money if you like, but which is sort of like the farmaish you have in old school ghazal restaurants where you want the guy to play yaad piya kiya hai after 18 times. So you can use that option as well if you want us to discuss something or if you just have something to say. Apart from that, just generally subscribe and have fun. And now we can come to the main movie that we want to talk about, which I think all three of us are very impressed unanimously, which is an action hero written and directed by somebody called Anirudh Iyer. I don't know if he's made movies in the past. I really haven't looked him up yet. But man, what a film. मेरे को तो बहुत मजा आया. मतलब it is such a मतलब you don't really see Bollywood going this
deep on something so intricate. You know, they Yeah. never really have a spine to stand up for themselves really. वो मधुर भंडारकर भी पेज 3 बनाया, मतलब तू देखो कितनी घटिया है हमारी इंडस्ट्री while he is in the industry. Okay, मतलब I'm sure there are dark sides to it and people make movies about that, but I think in general the way that the film industry has been treated, and as people who live in Bombay experiences first hand, पता नहीं अब होता है कि नहीं, मैं तो मेरा तो घर है बॉम्बे में, बट भरत कैन टेल अस कि when you go to look for a flat, another factor apart from bachelor or religion or whatever, food or alcohol, it Yeah. is that film industry में काम करते हो नहीं देंगे घर, basically ये होता मेरे है. को, मैं जिस घर में रह रहा हूँ अभी, वो घर मुझे सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि मेरी वाइफ के पास एक जॉब है, क्योंकि मेरे जॉब के बेसिस पे मुझे कोई घर नहीं मिलता, ये वाला घर नहीं मिलता. तो मैंने अपना जॉब बताया ही नहीं किसी को कि मैं क्या करता हूँ. तो इतनी बुरी ये हालत है. सब चीजें होती है फिल्म इंडस्ट्री के साथ इन जनरल. अ वेरी मच maligned industry which took a lot of things on the chin last year or the past couple of years, and the way this film fucking hits back is so beautiful and satisfying to watch. There are parts of it that are not the best shot or best constructed. I felt there are. Okay, anyway, first I'll just give you guys, because now not going to go into spoilers on an action hero, but basic plot is a superstar guy who's a super action hero, Ayushmann Khurrana. Basically, he's on a shoot and he is shooting in Haryana. He refuses or just avoids meeting some local municipality politician's brother, who's come to take an autograph and a photo with him. Not an autograph, just a photo with him because elections are nearing. ये बंदा अवॉइड कर देता है उसको या जस्ट भूल जाता है एंड वो निकल जाता है. And in the first 10 minutes of the film, basically, this guy, the politician's brother, in anger, chases Ayushmann Khurrana. They get into a scuffle on an empty road, and by complete accident, this guy falls, the politician's brother, and dies. Ayushmann Khurrana then, essentially, that is where the story begins and whatever he goes through after that. So that is the basic premise, and there is such a charming quality about the movie where it makes you, I think, feel like an insider when you're not, you know. For example, it was very funny. There's a cop interrogating somebody from the crew who's the DOP. Okay, and there's an interaction between them where the cop is like कि तुम क्या समाज को क्या देते हो तुम, director of photography क्या होता है, मतलब just that those kind of interactions, how Bollywood or just society perceives things as one note, which is one thing is above and one thing is below, and the people on whichever side are perceived a certain way. It sort of challenges those things that at the end of the day, people, even if you perceive them to be assholes, they're just doing their job or whatever. So वो सब चीजें address करती है movie. It's very, very ideologically driven also, the movie. I'm not necessarily politically, but just it has a very there is a very pessimistic sense of the world in the movie. That's how I'll put it, and I really love it. I think it's a very realistic, very, very interesting मूवी. तो मैं तो बोलूंगा प्लीज देखो ये मूवी थिएटर में जाके, बिकॉज मैंने देखा, मैं पहली बार तरन आदर्श के ट्विटर पे गया कि मेरे को देखना था ये मूवी पैसे कमा रही है कि नहीं, क्योंकि आई फील लाइक इट्स सच एन एंटरटेनर. अगर लोग जाएंगे तो पक्का देखेंगे, मतलब फॉर श्योर, मतलब दिल भी. बट यार नहीं कमाए, बिल्कुल भी नहीं कमाए पैसे, व्हिच इज क्वाइट सैड. फ्लॉप हो गए. What about you But guys? Which one it's of so you wants to weird go first? because it's such a mass kind of entertainer, right? Yeah. Everybody was like, like they were cheering at the same time. They were gasping at the. I watched it again. I watched it for the second time, and every time the audience is reacting to the same kind of jokes, the same kind of Exactly. moments. तो बहुत ही तगड़ी फिल्म लगी यार मुझे overall, and in fact I also liked how it comments on a lot of things. Like it comments on, even for example, one of the small things that it comments on is how media is different in the small town and how it is more resourceful and has a more ear to the ground than anybody else in the system. Like the police is clueless, but the small town media person is actually the person who kind of helps them out. So it makes a lot of points without
without stopping the entertainment. You know, the jokes. It's essentially like a sitcom kind of a joke thing. कि हर scene में humor is paramount. उसके बाद जो हो रहा है वो हो रहा है. So I found that approach really nice. कि यार it's not driving home some serious point by being serious. It's staying true to its action film, you know, template, and it goes to like some weird fucking places. If you get, I mean, I don't want to give any spoilers. Yeah. But बहुत ही मस्त movie है यार. इसमें क्या बहुत ही बोलूं. मजा है. I really like the music. The music Very of this good. movie is probably the best I've heard Bollywood से. मतलब Yeah. like first time Bollywood में ऐसा movie. I felt like if you go to this film and you pop an E and you go inside. You pop E. Look at fucking Himanshu promoting drugs I'm on not this I'm channel. not promoting, but it's like a techno, hard techno ना. Like so people. बहुत techno, हाँ बहुत techno. हाँ. And it's सही है, मतलब मजा आता है सुन के. हिमांशु सच्ची बात है, तू करके गया था क्या? नहीं, I've never. But then I have only like I understood when I was listening to it. Na, just hard techno. Suddenly Yeah, action. your friend told you how it is. My friend told me to check it out. हाँ. Check the film. So, But definitely scored very well. Those chase scenes, those Yeah. action scenes, मतलब इतना सही scoring किया है यार. बहुत. I really like प्यारी the film है, illusion, बहुत. you know, like so the way the film starts only, it's an illusion. So we know we are watching a movie, but the movie starts with this guy shooting a scene, and because we are watching the behind the scenes, it establishes that this is reality. And whatever happens outside, which is not happening on the set, is real. So Ayushmann Khurrana, we know he's Ayushmann Khurrana. He's an actor and he's an action hero in this movie. He's playing almost a Salman Khan character. But the moment he leaves the set, now this is real life. And you know, that's how, you know, it becomes more grounded and real and it feels real. I felt like that was the best part about it. Second, a couple of things. I felt like I really liked Ayushmann ka character because he has been written to be like Salman Khan, but flawless. Like a good guy, a good Salman Khan. मैं No, इस I पर don't ही agree. आने वाला था अभी कि उसमें एक बहुत सही सीन है. सलमान खान के भी तू रेफरेंस लाया है तो फॉर कॉन्टेक्स्ट दिस इज नॉट अ स्पॉइलर बाय द वे, ठीक है. विच इज बेसिकली ये बंदा कहीं पर भाग जाता है, मतलब आफ्टर ही नोज दैट ये बाहर आने वाला है दिस न्यूज, तो हिज मीडिया में सब लोग इसको अटैक कर रहे हैं, मतलब कि इसको हैंग करो, जो भी इसके सुपरस्टार हमें धोखा देते हैं व्हाटएवर. एंड बेसिकली प्लान ये बन रहा है उसका जो मैनेजर है सब लोग हैं, लोग बोलते हैं कि इसका जो स्पॉट बॉय है, इसका जो असिस्टेंट है भाई मत बता, क्यों बता रहे हैं सब. पर ये तो नहीं, वो भाई वो शुरू में ही तो है, वो छोटा सा वो, I feel like we can ask our audience, you know, like मतलब ये उतना स्पॉइलर ही नहीं है. हाँ मतलब ठीक ये है, तो चल क्या बोल. उसको बेसिकली पॉइंट इज दैट ही इन हिज इंटरेक्शन विद हिम दे लाइक अच्छा इसको कर देते हैं, इसको वो कर देंगे इसके ऊपर, जैसे सलमान खान का केस था ड्राइवर वाला होल सीन, तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक इस पे इल्जाम डाल देते हैं वैसा टाइप. पर द वे द कॉन्वर्सेशन इज देयर ना ऑन द फोन बिटवीन द टू ऑफ देम, it is so dickish of Ayushmann Khurrana. Like I'm not saying what happens, but or what the conclusion of these things is, but it's just very funny of the way he's talking to him also. वो अपनी गाड़ी की बात करता है कि गाड़ी पे कपड़ा लगाया कि नहीं. नहीं, I felt that was, मुझे ऐसा लगा कि यार I'm trying to find a flaw in his character. आयुष्मान खुराना कितना हरामी है मैं देखना चाहता हूँ इस मूवी में. How bad is he? But at every point ना, it felt like he was real. He understood the ground reality. He was not delusional. He knew what, and he had a good ego, like a healthy amount of ego. कि यार मैं वापस आऊंगा तो गाड़ी को कवर कर. It's healthy कि मतलब he expects a comeback. That much amount of ego is good. It is very much in line with my ego or your ego as audience people. I can imagine if in that situation मैं भी सोचूंगा ना एक सेकंड के लिए यार मेरी गाड़ी कैसी है. बट मैं ये भी चाहूंगा कि मैं अपने ड्राइवर को बोलूं भाई तुम सच बोलना और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और वगैरह वगैरह. सो आई थिंक फॉर मी व्हाई हिज कैरेक्टर वर्कड इज आई कुड पुट माई सेल्फ इन हिज प्लेस एंड कोई जेल नहीं जाना चाहता. ठीक है, अगर मैंने किसी को गलती से भी मारा तो मैंने मारा तो है ना, राइट? तो बट मैं हरियाणा के जेल में नहीं जाना चाहता हूँ. पॉइंट इज दैट. सो इट काइंड ऑफ इमीडिएटली पुट मी इन द shoes of this superstar. So that is what I like. And also there is one point which
both his character and Jaideep Ahlawat's character say in subsequent scenes, मतलब एक के बाद एक, कि सबके सब साले नकली हो तुम लोग. And he says it to his people, like on the call, and this guy says it to the cops and the friends. And that I feel is very, I mean, I'm not like, this is where the theme of the film also sort of comes forth, right? Ki both of Alpha these male. characters are Alpha I males. think वो alpha males से ज्यादा ना, it's also about वो नकली असली वाला, and I also noted that कि दोनों situations में word use हुआ है, and I think it was also, I think it was more about that whatever space you will operate in, you should own that space and you should act accordingly, I suppose, you know. And also it's I also think it's about power and narratives. At the end of the film, it's about the narrative, right? And who sets the narrative in our society? Who sets the narrative? There's the media, there's politicians, and there's these fucking actors. Jo, and I was immediately reminded of Shah Rukh Khan. How Shah Rukh Khan talks about, I am just an actor in the service of a brand, that is Shah Rukh Khan. Correct. And that seems to be true, right? These guys kind of live and die by personality. Right? I also think that ये जो film, a point that it makes, or at least in general what I've also noticed, is कि in India this relationship with actors, right? Or I think maybe this is globally also, क्योंकि India जैसे देश में इतना inequality है, ठीक है, कि like we are probably closer to, in terms of our whatever income status, are closer to stars who earn I don't know how many million times more than us, than we are to people who don't make as much money, who work in menial jobs or who work in labor jobs essentially, you know. And I think हमारा जो क्लास है वो ही मोस्टली ये सब मूवीज कंज्यूम करता है थिएटर वेटर में, और जो ट्विटर पे आके गाली देता है या जो भी, वही मेनली वही क्लास होता है आई थिंक लार्जली. एंड आई थिंक उनका कॉम्प्लेक्स ये आता है कि अगर हम इनको मॉरल पेडेस्टल से उतार देंगे तो हमारे पास थोड़ा सा मॉरल पेडेस्टल आ जाएगा. आई थिंक इन फैमिलीज वो थोड़ा सा होता है कि हम we don't want to see how we treat people who are of a lower income level than us, then तो we look at them and be like, ये देखो कैसे हमको ट्रीट करते हैं, because we are at a lower income level than them. But actually वो वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे तुम भी बाकियों को तुम जैसे बाकियों को ट्रीट कर रहे हो. बस डिफरेंस है कि हम उनके एडी बनते हैं, राइट, और हमारे घर में कोई और काम करता है. मतलब इट्स, आई थिंक द डिफरेंस इज जस्ट दैट मच बेसिकली. So I think it makes that point also. Very good study of India. There is one scene I want to talk about, which I cannot because it is most definitely a spoiler. But without spoiler review दे दे अभी. नहीं वैसे बोले spoiler. But I can do this without the spoiler also, which is कि there are 3 people sitting on a table, ठीक है, at some point in this movie. So 2 of them are, there is a politician, there is an actor, ठीक है, ये दोनों जयदीप अहलावत and आयुष्मान खुराना. There is a third character who I'm not going to reveal because that's one of the funniest points of the movie. Okay, but when these 3 are sitting across the table, and these 3 share a very deep relationship with Indian society and culture over the past 20-30 years. And if you take them as metaphors for their singular industries, politics, films, and the third thing, it's like and that scene basically ends with Ayushmann Khurrana saying, मैं नहीं हट रहा अभी, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा नाचता भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. मतलब which is I think was such a good this thing, it was such a release. I feel like, you know, Shah Rukh Khan and all would like sort of jerk off to that scene कि भाई हाँ भाई इतने टाइम से बोलना था यार, fuck. It's like that kind of I could feel that frustration. It was very cool. Very, very cool. मेरे पास एक point था. The only thing I didn't like about the film was ironically the action, especially the car action. The car action to me was very nalla. थोड़ा सा मतलब वो 2 ही शॉट रिपीट किए, तू नोटिस किया? कौन सा? जो भी वो चेज कर रहा है ना कार में. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, the first one, Vicky and this one, आयुष्मान खुराना. तो when they do, वो मैंने नोट, and currently I am on a shoot right now. और मैंने उसी दिन एक कार का शॉट लिया और मैंने बोला कि ये मैं ये सेम टेक ले लूंगा, एक और लेने की जरूरत नहीं है. एंड देन आई वॉच द मूवी और मैं बोला कि यार ये ऐसा लगने वाला है क्या, मतलब fuck.
अरे ऐसा और टाइप है। भाई इंडिया में कोई भी तुम कार सीक्वेंस का चेस सीक्वेंस उठा के देख लो, दे बेसिकली व्हाट दे डू, देयर ट्रिक इज वेरी सिंपल, दे जस्ट स्पीड अप द शॉट्स, ओके, कि दो गाड़ियां 40 की स्पीड पे चल रही है, उसको 2x कर दो 80 की स्पीड पे चलेगी। दिस इज व्हाट दे हैव डन सिंस द 70s। तो यही इसमें भी है। एंड कंपेयर इट टू यार, मतलब ये एक चीज है जो हॉलीवुड एटलीस्ट अच्छे से करता है, लाइक दे एक्चुअली डू देयर फकिंग स्टंट्स। जैसे वो एक डेथ प्रूफ में लाख बुराई है इस फिल्म में, लेकिन इट्स कार एक्शन इज फकिंग अमेजिंग। हैव यू गाइस वॉच्ड डेथ प्रूफ बाय टैरेंटिनो? I watched a little bit. हाँ मैंने पूरा नहीं देखा, but I've heard that it ended with the last day of shoot. Uma Thurman was severely किल बिल, injured. किल बिल, वो Kill Bill था क्या? She's किल not बिल in में Death Proof ना? नो 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 पर हाँ। हाँ, एंड एक्शन हीरो पे तो यार मेरे पास और भी बहुत सारे, बट थोड़ा सा स्पॉइलर ही हो जाएगा यार वो, मतलब मामला। एक point I'll tell you the funniest scene for me. हम्म The moment when I laughed immediately hard was the point when there's a particular dance, like a song where Ayushman डोंट, has नो to नो नो, dance. आई नो व्हाट यू आर गोना से। I'm वो not फनी telling उसीलिए anything. है जो ओके स्पॉइलर है। हाँ, वो I won't फनी say तब anything. होता है जब स्पॉइलर होता है। हाँ, हाँ, so that moment ना, I felt वेरी like फनी या। it is super good. Like it was. See, a lot of these like Shah Rukh and Kajol, they have a trademark dance, right? So they do like if you put Shah Rukh and Salman, Shah Rukh and Kajol from like बिस्तर से उठा के मतलब सोते हुए उनको स्टेज पे डाल दो, तो वो एकदम कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो ऐसा ही वैसा अच्छा, लगा हाँ। एक सेकंड के लिए ना, वैसा ही लगा कि बस आयुष्मान को बस डाल दिया स्टेज पे, उसने एक सेकंड के लिए कर दिया, एंड इट द बॉडी लैंग्वेज इज सो गुड ना, इट्स Yeah. दैट इट फील्स लाइक दैट कि उसने वो He's सोचा है acted ये। really well, यार। हाँ, I he but did. I loved जयदीप अहलावत यार, क्या एक्टर Fuck. है वो। बाप रे, उसके एक्सप्रेशन पे फनी लग जाता है, मतलब जोक उस द पंच लाइन इज हिज एक्सप्रेशन इन या लाइक ऑलवेज। एटलीस्ट 4 सीन्स। या I feel like तो the way he acts na informs the director and the DOP and how to shoot, and करेक्ट। the way his tone establishes the direction of the या scene, या so it helps a lot क्योंकि वो एकदम gangs of Wasseypur ला देता है suddenly इसमें इस movie के एंड अंदर। like early on, this is a less spoilery kind of scene where he looks at the dead body, right, ऑफ हिज ब्रदर, या of his brother. Even in that single shot you can feel for him, क्योंकि कितना हाँ। प्यार से वो, even the look that he gives is so nice. So also the तो बहुत ही सही। also another funny thing is कि वो उसमें in the movie, in the fictional movie they're shooting in the beginning, आयुष्मान खुराना's character उसको कोई बोलता है कि आपने भाई की हाँ मौत का बदला ले रहे हो, you know, हाँ so it was kind, but you know in general something like this it makes me very sad to see that it makes no money। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार और क्या करे इंसान, यार इससे ज्यादा आयुष्मान का मासी इंटेलिजेंट मूवी कैसे बनाए कोई। नहीं बन सकती। आयुष्मान का मूवी आयुष्मान का year has been very good हम्म except for Anek. He did. I haven't seen Anek. I don't think it's a good movie though. Matlab, people have not commented well हाँ, on it. But apart from that, Doctor G is a damn good film. And then is Really? this it? film, I really like Doctor G. It's damn funny. It's damn good. Really good. Huh? You guys should watch it. So I'll watch Doctor it. G and this film together ना, अगर किसी भी और एक्टर का ये दोनों फिल्म एक साथ आता ना, it would be a big deal because हम्म it's like a very मतलब भाई मैं पता है मैं थिएटर से निकलते टाइम सोच, और ऑल्सो बिफोर आई मूव ऑन, यार एक तो पहली बात, आई वुड रियली, इन केस यू मिस दिस मूवी व्हाइल इट्स इन द थिएटर एंड यू पुट इट ऑन ओटीटी, आई प्रॉमिस यू, तो इन द फर्स्ट हाफ ना ह्यूमर कभी कभी थोड़ा कम होता है, मुझे लग रहा था हाफ वे कि यार थोड़ा बम्प करना चाहिए ह्यूमर, यार कुछ और थोड़ा और आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था शुरू में, ठीक है, और वो थोड़ा ऐसा फील आएगा, बट द वे इट पिक्स अप इज amazing and it's so good. So You know, I also sorry, हाँ, I also I think benefited from watching it in like the gut of Bollywood, क्योंकि a lot of these not I'm not talking about the film stars, but all these technicians like first ADs, second ADs are always there, and they were like really hooting yeah, and yeah, cheering because, and there's a line which one of the Ravish Kumar stand-ins kind of characters हाँ, says right. कि तो क्या पूरी फिल्म बैन कर देंगे क्या, इतने सारे लोग हैं, and people are cheering on it because, and I could see बेचारे ये second AD, third AD मुझे खाली वही एक lacking part लगा that the skit, those should have been done better, the news sequences, while they what they basically did is कि they just took Arnab और etc, हाँ, दो तीन जो but अपने चूजे आए हैं अभी, उन सब का उन्होंने literally clip को खाली replicate किया, which is fine, fair enough, पर
But my point is, आप इन चीज को क्या पैरोडी कर सकते हो यार? It has gone हाँ, beyond parody. मुझे वही लगा कि इन लोग का लॉजिक भी होगा, इसको और क्या करें, क्या इसको करें? पैरोडी कैसे बनाए. इसको हाँ, पंच अप नहीं कर सकते. This is the हाँ. epitome of like what do you do? Like there's a TRP joke which I loved, by the way. हम्म. You remember? हाँ, Yeah. TRP वाला जोक भी था, which was very good. Yeah. हाँ, you don't, I think explain भी नहीं यार कर मेरे को पाएंगे वो हम. स्पॉइलर वाले सीन के बारे में बात करना है because it was so good. It was so fucking I good. think we should do a spoiler thing later when people have hopefully watched Correct, it, like correct, 10 correct. people. हाँ. But yeah. पर बहुत ही बढ़िया. And I also think that in general, movies like this I think need to be made a lot more. जो थोड़ी हाई कॉन्सेप्ट हो. आई थिंक बॉलीवुड इन जनरल दीज इट गिव्स यू स्पेस फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे हॉलीवुड अगर आप मूवीज देखो, वो लोग अपना कल्चरल, जो हॉलीवुड का जो कल्चरल बैगेज बोल दो या जो भी उनका एड ऑन है, वो सब वो लोग पूरा निचोड़ चुके हैं, ठीक है, अपनी मूवीज में, कि क्या कैसे दिखाना है, कब दिखाना है, किसको, मतलब कोई एक्टर आ गया या कुछ, वो लोग वो सब कुछ कर चुके हैं. और हमने I think there is a lot of space and that's an opportunity also in a sense to do this kind of work where you can explore your cultural flashpoints and those Yeah. So, by the way, movie में एक, if you notice, वो एक while he's changing the channel, there is one frame of Anurag Thakur skipping rope at the Skipping India Today rope. conclave, which was भाई, so funny to me. and immediate laugh आया था. Immediate. Immediate हर एक हाँ. जो भी वो चैनल फ्लिप कर रहा था, हर एक पे immediate laugh आया था. हाँ. And there is one line which I love, which is done very editing, like montage way, where there's a Hindi TV anchor who says, नहीं मिल रहा है मानव, मिलेगा भी नहीं, नहीं मिलेगा, ऐसे कहता है, and then ढूंढना पड़ता है. Dude, okay, I have one more thing to add about this. भाई इस मूवी में जब ये बंदा fuck man, I can't go into anything unless it's a fucking. भाई प्लीज देख लो सब मूवी, फिर उसके बाद अगला सेशन करेंगे. प्लीज देखो, प्लीज ये मूवी देखो प्लीज. ओ या अनदर, अक्षय कुमार एज अ कैमियो, इट्स राइट इन द बिगिनिंग, ठीक है, इट्स राइट इन द बिगिनिंग. कैन वी गिव द बेसिक थिंग कि वेयर ही गोज, मतलब वो उतना हम लोग स्पॉइल कर सकते हैं? पूछ बोल के बोल दे भाई. I think the problem, even बहुत the directors couldn't like make a good trailer out of the movie because everything is a spoiler. नहीं ऐसा तो I don't know, maybe you're right. The whole film is a spoiler. You spoil one point, everything gets No, spoiled. it's not. The point I'm about to say, okay, this is mild spoiler, I'll call it. It's not really a spoiler. Basically, he runs off to, I'm giving you 3 seconds, okay? Okay. He basically immediately after doing the murder, he flies to fucking London. Because he's like everyone who runs away from India. After doing some jhol, they run to London. So he runs to London. ठीक है? तो जब भी वो जाता है वहां पर, basically on the flight he runs into Akshay Kumar, ठीक है, and this is not a spoiler, but Akshay Kumar has a devilishly funny line which is basically he tells Akshay Kumar ki sir मैं फंस गया हूँ, आपने तो इतने दिन देखे हैं इंडस्ट्री में, आप मुझे कुछ बताओ क्या. And then he says हाँ बता, and then it cuts away to something else. It comes back, Ayushmann Khurrana has told him the whole story, and then Akshay Kumar is like, मैं खाली एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, बाहर जाके बस ये मत बोलना तू मुझसे मिला है. You know, it was so fucking funny. And the thing is, I realized at that moment, हमने पॉडकास्ट से बोल चुका पहले कि अक्षय कुमार, अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं कहीं से, ठीक है, प्लीज गो बैक टू डूइंग हरामी कॉमेडी रोल्स, because I think Akshay Kumar is gold when and not the fucking shit movie gold when he does these comedy roles where he's playing an asshole. Okay, it is so good. He's so good in those. He's actually very natural. He's very natural. He's very natural. पूरा it comes naturally to him. हाँ, इतना वो मस्त अपना लगता है. एक्शन कर करके ना उसने कॉमेडी छोड़ दिया यार. For some Action, reason social message, everything that Ayushmann Khurrana does well, he does badly. वही तो यार एक टाइम पे I was on the अक्षय कुमार Hype train. train. I was, like that भूल भुलैया Sing is King, Hey Baby वाला time ना, I was on Akshay Kumar train. Welcome. Yeah. Now तो I am on Ayushmann Khurrana train. Yeah, I mean, if you Currently. still watch Hera Fairy or like a Garam Masala, which is a very fucked up movie, but like a lot of these movies, भाई उसने क्या काम किया है यार उस समय, even in Bhagam Bhag types, like
I'm realizing all of these are Priyadarshan movies. So it's like, you know, I find it very funny when people say कि अभिषेक बच्चन बहुत अच्छा एक्टर है, उसने उसने गुरु में क्या काम किया था, और कौन सी मूवी, युवा में भी ठीक ही था, ठीक है. तो दोनों मणिरत्नम की मूवीज. ओके. Like I'm like, हाँ उसने भाई. बट उसने मणिरत्नम ने रावण बना दिया यार. मैंने देखा नहीं हूँ, मेरे से हिम्मत नहीं है. गोविंदा भी है ना नहीं उसमें. अच्छी कभी मत भाई, देखना. मत देख. मैं रावण तो फर्स्ट डे भाई फर्स्ट शो गया था. मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही गया था. मैं भी एकदम ही घटिया मूवी है, मतलब नेक्स्ट भगवान. लेवल शिट है. एंड आई डोंट नो हाउ दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू मेक इट अ रामायण. मत देखना. They Apparently fucked up. during the shoot of Ramayana नहीं, ये क्या नाम है, Ravan, रावण. this guy got a heart attack. अपना प्रियदर्शन नहीं, कौन है, मणिरत्नम. मनी. Oh, So for 30-40% of the film he was not directing. His first aid he was directing. That's the story. That's how it goes. I which don't know. basically means Govinda was directing. क्योंकि गोविंदा I don't think फिर he would आया give any ये, first AD the भाव to. फिर मणिरत्नम आया, उसने सारे सीन काट दिए गोविंदा के, एक सीन है फिल्म में. Literally. हाँ, वो कुछ तो मैंने Random. उतना देखा, वो एंट्री पॉइंट पे वो ऐसा कुछ तो पेड़ पे बैठ के कुछ तो कमांड मारता है. ऐसा कुछ. He plays like he's a monkey only. हनुमान है ना He's- वो तो. हाँ, but he's, I mean, okay. He's I won't say. jumping from trees to tree. He's like he's doing that stuff. He's bouncing around. And but he does have a like a good interesting role. Only Abhishek Bachchan fucks up in the movie, I feel. Yeah. He fucks up royally, dude. हाँ. He fucks up royally. There is a bilingual thing in that. Remember, so in the Tamil language, the person who plays Ram plays Ravan, and he does a fucking good job at it. And इसमें उसने हगा है proper. The person is the same person now who played Aparichit. हाँ, अपरिचित. Oh, the same guy. वो Yeah, क्या क्या नाम क्या था नाम उस भूल कैरेक्टर जाते का हैं नाम? विक्रम. चियान विक्रम. नहीं, चियान. अपरिचित में उसका नाम क्या था यार? अरे यार, रेमो नहीं. रेमो. नहीं. So पूरा बैकग्राउंड में रेमो and something Nandi. No. नंदी. हाँ, नंदी I think. Nandi. Sorry. What a fucking movie, dude. Oh my god. कैमरा के लेंस के सामने जो हेयर उन्होंने गिराया है ना. हाँ, वो Like ऐसा fucking बाल का शॉट बहुत फनी. क्या मूवी है रे. अपरिचित. विक्रम बोल रहे हैं लोग. हाँ भाई. विक्रम. चिया विक्रम. चिया बोलते हैं क्या? चिया सीड्स. मैंने कल ही एक बहुत फनी वीडियो देखा है सलमान खान का बोलते हुए डियर चिरुगारू, and he says it in the most sultry voice that exists. That is Chiranjeevi. That is where I understood why both Asher and Katrina broke up with this dude. In that moment. Saying that to you while you wake up, भाई मैं तो भागूंगा घर से फटाफट. यार सलमान खान की एक मूवी आके चली गई, एक इंसान ने नहीं देखी. कौन सी मूवी? यही तो गॉडफादर. चिरुगारू वाली मूवी में वो उसने छोटा सा रोल, you know. But चिरुगारू की मूवी has been a hit in the South states. But nobody like सलमान फैन जो होते हैं ना, उनको नहीं, उन्होंने नहीं देखा. सलमान खान की एक स्पाइसी बात तुम्हें पता चली this past month? नहीं. So basically Somi Ali, who is the ex-girlfriend of Salman, one of the first girlfriends, I think the first girlfriend of Salman, she's a Somi Ali, SOMYALY. Okay. ALI. She is it that Pakistani woman? Yeah, she's a Pakistani lady, and now she settled in USA. And so in August also she had made a claim on Instagram that this guy abused me and all that. And now she's come back again and posted a post saying that all your cigarette butt burning on my body and your physical abuse and your gaslighting. सोडोमी. भाई gaslighting यहाँ है और sodomy कहीं और है. So all of that you can't get away with this, and I know your army of lawyers will try to hurt me, but you can't touch me. And all those women who have associated with you and vouched for you and supported you, I hate you guys, whatever. And within, I think within minutes of this being posted, it got deleted. So it's I mean, when it comes to Salman Khan, I think 80%, and this is the ironic part, okay? I think there is a left. ये मैं बहुत अजीब example एक दूंगा. I am sure all of you have seen the video of Ram Gopal Verma sucking somebody's toe, okay, which has recently come out during an interview, which apparently he put out himself, okay, whereas other people would pay good money to not to have that. वो 1.5 घंटे का interview है, उसमें interview, know how it's happening in that position, like he's holding her feet and he's talking like this, and she's talking.
Yeah. So I'm just saying, I think there is a point when whether it's Salman Khan or a Ramu or whoever, if you once you cross a level, na, I think once you cross a level, people stop giving a fuck and they start finding you charming only. I think after that point, कि ये तो इतना घटिया इंसान है, पर इसने देखो आज किसी को चाटा नहीं मारा. मतलब I think वो जोन में लोग उसको अज्यूम करते हैं. Like for example, people at this particular moment hate like random hate Deepika Padukone. Like average, I'm talking about like if you go to average Indian whatever middle upper class households, they hate Deepika Padukone way more than Salman Khan. ठीक है? Yeah. Salman Khan is a much more acceptable face than Deepika Padukone. Okay, who I think both of them are equally bad actor. No, not okay, maybe not equally. अब एक्टिंग के बारे में तो बात ही नहीं हो ये रही. एक्टिंग की बात नहीं है. हाँ, तो just as personality, she is definitely much भाई a दीपिका normal ने person. at दीपिका the तो कोई most पर्सनालिटी है ही नहीं. दीपिका तो आई हैव नेवर heard her say anything from her Her mind. person, I have a very mean joke, but I cannot say it. भाई दीपिका ने तो सिर्फ जलाया, उसने तो दूसरे की स्किन पे ऐश किया. तो there is जलाया no- मतलब क्या? हाँ नहीं, of course Salman is way worse if you are उसने comparing. सिर्फ गांजा जलाया जिस वजह से उस ओ हाँ, एंड सलमान खान ने वो मुझे ऐश ये किया. पता है आर्यन खान के लिए इतना बुरा लगा था जब भी सही उसका में. सीन हुआ था, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट एक्शन हीरो और उसका मेरे को फ्लैशबैक आ रहा है वो जब भी वो सब सीन चल रहा था. नो, द रीजन आई फेल्ट बैड फॉर हिम की नॉट बिकॉज उसके ऐसे लालछन उछाड़ जा रहा है उसके ऊपर, बट बिकॉज आई एम लाइक उसके पास क्या मिला, इतना सा हैश मिला. मैं बोला भाई अगर ये, मैं तो सोचता था ये अमीर लोग मतलब ये तो कुछ मतलब कुछ तो ये तो ढंग का बड़ा गेम भारी, खेलते होंगे. अगर ये लोग इतना सा कॉलेज स्टूडेंट लेवल का हैश लेके घूम रहे हैं तो काफी सैड है यार इनकी लाइफ में. मुझे नहीं कमाने पैसे फिर, मतलब अगर उतना पैसे कमाने के अभी इतने से हैश के लिए पर बाकी कुछ कैरी नहीं करते होंगे ना, बाकी तो सप्लाई करते होंगे, अपने कंज्यूम बंदे करते. कैरी करते हैं वैसा टाइप तो बोल हाँ, रहे हैं. हाँ, तो उसके लिए बाकी छोटे मोटे एक्टर्स के बच्चे होंगे. चंकी, यू नो दिस रूमर राइट? Yeah, I know the rumor. I know the हाँ, rumor. I just didn't want to say it. should we say it? Say it. I don't care. I don't. It's a rumor. मैंने नहीं सुना यार, क्या रूमर है. तो मैं इसका ओनरशिप नहीं क्लेम कर रहा हूँ, मैंने खाली ये जनरली सुना है कि Chunky Pandey is apparently the reason people keep him around even now is that he is the drug dealer of the industry. He's the biggest. Yeah, that's what they say. This is what we've heard. This is We what don't we've know. heard. There is no It's probably fact. not true. Oh, yeah. Probably not. I am willing to Yeah. completely apologize to the Pandey family immediately. I am not even saying it. I've just heard this. तो यार उसका नाम भी ना चंकी है, मतलब there has to be some meaning behind it. Somebody thought it out as a joke for some. क्या है, what a chunk of what are you talking about? मैं जब थोड़ा सा स्टैंड अप कर रहा था ना लाइफ में, तब मैंने एक जोक लिखा था जो आई डिडंट एक्चुअली परफॉर्म, व्हिच वाज बेसिकली कि like I don't have a problem with nepotism, but I have a problem with nepotism for anybody. So why do Shakti Kapoor and Chunky Pandey's children get chances? Like why do they? I'm saying I understand if I don't know, like Alia Bhatt gets a chance or a Ranbir Kapoor. Like it's a, how is it that Shakti Kapoor's, like how is that, where is that conversation starter happening? That is what I want to know. You know, matlab there is, and I really want to ask you guys, कल because को as अगर people who are- विवेक ओबरॉय का daughter comes up and becomes a leading lady, you'll like it feels weird ना, like हाँ, विवेक was विवेक not a ओबरॉय leading खुद- actor, खुद अपना कुछ नहीं किया तो उसका नहीं, like मैं that कह रहा हूँ, meme. विवेक ओबरॉय भी सुरेश ओबरॉय का बेटा है. हाँ, मतलब बेटा. सुरेश ओबरॉय ने घंटा कुछ नहीं. but you know this is ये कोई तो बोला था यार, ये विवेक ओबरॉय क्या? सुरेश भूल गया तू. now I've forgotten anyway. पर Anyways, नहीं, it's हाँ, good I to- want to ask you as people who are in vaguely in the industry, तो मतलब do you guys get mad about nepotism? Because पूरी दुनिया को गुस्सा आता है, हम लोग एक्टिंग नहीं करते obviously, but like because we are most likely to be affected by, मतलब most likely that Temur at some point will slap Bharat, Himanshu or me. That is rather than the people who get pissed off at these guys. भाई मुझे तो बहुत ही वियर्ड लगता है कि लोग इसको जस्टिफाई करते हैं नेपोटिज्म को, कि हाँ है, स्पेशली दिस फकिंग स्टार्स. लाइक Yeah, वो बहुत अजीब लगता है. बहुत ही अजीब लगता है मुझे यार. तुम क्या मतलब, यू लिटरली से हाँ हूं मैं, कर लो ऐसा. इट्स लाइक लिटरली इट साउंड्स लाइक दैट. So, and Yeah. even though I would say that I am in a position where I'm not directly affected, because
I'm not acting, but Hmm. it just seems But so यार as an weird. actor it must be so तू सोच अगर writing was a glamorous profession और तुझे भाई, पता चलता है कि सनी देओल का बेटा आके तेरे जगह पे स्क्रिप्ट लिख रहा है तो तुझे गुस्सा seriously, नहीं आता मतलब बहुत गुस्सा आता है I think. seriously. हाँ. And you But can I'll see, tell you and you one can thing. see how. हाँ, बोल. Like, imagine this guy, like Arjun Kapoor. He started as a leading actor in Bollywood movies because of nepotism. But now, currently, like, no movie of his comes out or भाई, he doesn't. Bro, I watched a movie a week ago. I was looking for a cringe film to watch. हमने Netflix देख रहा था. एक Villain Returns. it's नई a hit मूवी by आई the है. way. इतनी घटिया है. It's a It's a hit. hit, financial hit. Ek, It's a hit. yes, it's a financial hit. Look it up. Ek Villain 2 is a hit. It's, I don't Has know anyone watched if this it's movie by bad. the way? I have watched it. It's You crazy. watched it, Bharat? Yeah, I watch cringe movies. Bro, इतनी घटिया मूवी कभी आज- देखी है आज- तूने लाइफ में? अलग है वो फिल्म. I'll just एक one मिनट. small point I'll leave you all with. Guys, okay, one thing. Shreyansh Singh, you guys wouldn't try to help your kids in their career. पहली बात मेरे बच्चे नहीं है, ना ही भरत और हिमांशु के हैं. और दूसरी बात, I don't think हमारे कोई प्लान है वैसे बच्चे करने का. तीसरी बात कि अपने बच्चे अगर मैं अपने हम बच्चे को लोग के अगर लिए, भरत के लिए फैमिली प्लानिंग क्यों कर रहे तू? हाँ भरत को खुद करने दे. भरत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो मुझे हर चीज बताकर ही करता है नॉर्मली. पर अब तक कुछ बताया नहीं है इसके बारे में. तो हाँ, तो अगर मेरा देख श्रेयांश, अगर मेरा बेटा अर्जुन कपूर जैसा एक्टिंग करेगा ना तो मैं तो चाटा मार के निकालूंगा सेट से, ठीक है? तो प्लीज ये अजीब सा पॉइंट है. बट एक विलन रिटर्न्स में देयर इज बेसिकली दे लुकिंग फॉर अ किलर. The cops are looking for, they think Arjun Kapoor is the killer. The cops raid Arjun Kapoor's hotel room where he escapes and उधर उसने एक bomb DIY bomb plant किया है जो explode होता है, killing multiple cops. Okay, but after a point at the end of the movie they basically find out he wasn't the murderer and they let him go scot free. And I'm like, hold on, did you forget that he basically killed at least 15 cops in a hotel, like very openly? पर उसका तो इट इज एट दैट लेवल. और वो मूवीज अगर चल रही हैं जो तुम लोग मुझे अभी बता रहे हो तो फिर But I'll प्रॉब्लम है. tell you, I'm happy about one thing. विदेशी कुछ I कम. read one like Reddit post हम्म. which is about Ananya Pandey's career, and it's one of those Reddit, that subreddit na, that Bollywood and gossip or something. Don't pretend that you Bolly, don't know the exact name. It's Exact name Bollywood याद and नहीं है. gossip, sir. Bolly हाँ blinds and gossip. Please say with हाँ. some respect. It said basically अनन्या पांडे का करियर में आज तक एक भी हिट नहीं हुआ, ठीक है? And she's still getting roles by the way, but not a single hit, Hmm. which is why her what do you call it, amount of money that she charges, fee, is getting lowered and lowered by the movie. मुझे लगा चलो like survival of the fittest, you know, like it's happening. At least there is, even in Nepo Kids there is a अर्जुन कपूर तो फिट भी नहीं है. नहीं This नहीं नहीं is अभी है. But हाँ. do you think there should be like a would you watch like a Hunger Games with Nepo Kids? I would Like watch an a actual real life Hunger. Hunger Games with Nepo That's Kids for what. sure. Only one of them can survive, and that person will get to go on Karan Johar one time, on Karan हाँ. Johar's show. नहीं, not show. That is the condition. Movie, Karan Johar का movie का leading actor, you just do a Hunger Games, Hmm. put couple of guns in the middle of Wankhede Stadium, Hmm. and put some bats and baseball bats and stuff, and let them have it. You Hmm. know, go for it. Nice. ये same इसका भी था पता है. There is a very funny set very similar to this अच्छा, by George Carlin. is this joke done like somebody This else? is a George Carlin joke where he basically says that putting a Oh. lot of people in an arena and having them kill each other very quickly as a reality TV show. ऐसा कुछ तो उसका एक सेट था. हाँ. Arjun Kapoor in Squid Game, Battle Royale with Nepo Kids. Yeah, it'll be very fun. Anyway, अच्छा, which other movie भेड़िया के बारे में बता ना भरत. Yeah, Bhediya is a good film. Bhediya is an interesting film. It's a little long. I mean, बहुत ही फालतू के उसमें subplots हैं which don't work. But if you liked Stree, I'm sure you guys have liked if you watched. It's a good film. It's not as good as Stree, but it's a good film. And sorry. it's
sorry to continue. It's in the same universe. Everybody's kind of now making the metaverse, right? Their own universe. तो ये अमर कौशिक ने भी अपना एक स्त्री यूनिवर्स बना लिया है. So it's part विजय of the देवान. same. विजय देवान नहीं, that is दिनेश विजन. तूने विजय देवान कर दिया. दिनेश विजन नहीं. अमर कौशिक is the director. दिनेश विजन is the producer. अमर कौशिक का एक यूनिवर्स बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन भेड़िया फ्लॉप हो गई तो we don't know. अच्छा, It's again, हाँ, you said. Cinephile 007 has said Taimur will definitely slap Bharat. I'm damn sure. भरत तब तक वेटरन डायरेक्टर बन जाएगा वेटरन बॉलीवुड डायरेक्टर में, भरत और तैमूर का फिर डेब्यू सोच होगा. सैफ अली खान आगे तुझे सॉरी बोलेगा, जैसे शर्मिला टैगोर ने, इफ पीपल नो दिस, दैट अपेरेंटली सैफ अली खान को बिल्कुल भी तमीज नहीं थी लाइफ में जब भी वो शुरू किया था एटलीस्ट, और शर्मिला टैगोर अपेरेंटली हैड टू कम एंड अपोलोजाइज टू एवरीवन ऑन सेट, ऐसा मैंने सुना है कि he was behaving very badly and wasn't talking nicely to literally anybody and was just being a dick, so she had to come and apologize to everybody and be like कि भाई sorry है, थोड़ा इसका दिमाग थोड़ा सट के लाया whatever, तो वैसा टाइप का वो सब फाड़ू नॉट देख वायरल के फाड़ू. वीडियोस देखे हैं सैफ अली खान के पुराने वाले. सैफ अली खान का मैंने एक वीडियो देखा है जहाँ पे अक्षय कुमार भी है, और अक्षय कुमार है या सैफ अली खान है, कोई तो एक है. सैफ अली खान कुछ तो गाली दे रहा है, ठीक है, कुछ तो गाली दे रहा है, एंड अक्षय कुमार इज रोलिंग अ जॉइंट और क्रशिंग तंबाकू और वीड. आई डोंट नो व्हाट ही वुड प्रेफर, बट वो ऐसा कुछ तो अपने थंब में वेरी, और मे बी रोलिंग टोबैको, आई डोंट नो. सो वो ऐसा कुछ तो ऐसा मिक्स कर रहा है उसमें, और वेरी क्लियरली नहीं, सैफ अली खान का आई नो व्हाट इंटरव्यू हिमांशु इज टॉकिंग अबाउट. इट्स वेयर ही इज अ यंग गाय एंड उसको पूछ रहे हैं बड़ी बड़ी बातें. इज लाइक अरे यार मैं पार्टी करता हूँ रात को 2 बजे तक, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, ये सब तो बूढ़ा होके सोचूंगा ना. बाय द वे फाड़ू, ओ हाँ, फाड़ू के ट्रेलर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, तुम लोग देखो जरा. बट आई सॉ द रिव्यूज एंड इट वाजंट ग्रेट. पर यार ऐसे किलो के भाव पे जो शो बन रहे हैं आजकल, मतलब आई कैन अश्विनी अय्यर हैज मेड इट राइट. यस, अश्विनी अय्यर तिवारी, नितेश तिवारी की बीवी. She has co-written and directed it. She had made something else also. She had made Bareilly Ki Barfi, most notably. Is Shreyansh Singh is your son or daughter in this thing? Is that why you were so touchy about कि हम, क्योंकि ये बोल रहा है फाड़ू देखो, और ऑल्सो बोल रहा था कि आपने किड्स को हेल्प नहीं करोगे करियर में, तो ये शायद हेल्प तो नहीं कर रहा अपने बच्चे को. नहीं, उसमें वो है सयामी खेर भी तो खेर है ना. Oh fuck, is she connected? No. To whom? To खेर यार. whom खेर? नहीं, I don't think she is. उतना अब मत घुसो. हाँ, अब मत घुसो उतना. वरना उसका करियर बच. हाँ, she would be better off then. Yeah. नहीं भाई, मेरे को बहुत नींद आ रही है अभी. चलो, ओके भाई. Recommendations or anything else? मैच है भाई, 12:30. तुम लोग एक्साइटेड दिख नहीं रहे हो मुझे यार. मैं ट्राई कर रहा हूँ फॉलो करने का, बट मेरे को नहीं मिल रहा टाइम, और मैं पर 1-2 मैचेस देखे हैं, तो वो मजा आया मुझे. आज अच्छा गेम है, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस. फक, इंग्लैंड फ्रांस है. या, एंड फ्रांस इज एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रांग. आई एम प्लेसिंग माय बेट्स ऑन फ्रांस टू विन द वर्ल्ड कप. ठीक है, बहुत ही सही. तो अगर आप भी सट्टा लाना चाहते हो तो भरत मिश्रा रेकमेंड्स फ्रांस. Anyway, this was episode 85 of the DissContent podcast. We're 15 short of 100. We should do something nice for 100. Yeah, we should. Like भाई 100 से ज्यादा है. सॉरी, तूने मैच देखा क्रिकेट का आज? ओ भाई, मैंने कहा, मैं लिटरली सेट पे था और मैंने स्कोर देखा और मैं बोला कि भाई ये तो मतलब हार तो गया सीरीज ऑलरेडी. एंड देन आई सॉ ईशान किशन एट 160 or some shit. And Ishan Kishan made the fastest double century in ODI history. ODI cricket, yeah. 210 बनाया, and Kohli also made 100. कोहली ने साइड में एक fucking epic. हाँ, बहुत सही यार. मेरे को लगता है अभी I think अभी विदा लेने का टाइम आ गया है रोहित शर्मा से. हाँ, वो तो है. और KL राहुल को भी I think IPL में ही रखें तो बेहतर होगा. उसकी कोई जरूरत नहीं. बट कोई होप नहीं है मुझे इस बार भी वर्ल्ड कप की. अगले साल ही है ना अपने भाई इंडिया में. यार अगर इंडिया में भी नहीं खेल पाए तो फिर काफी एम्बैरेसिंग. बाय द वे, मैं मेलबर्न में था और मैं फाइनल के मेरे पास टिकट थे और मैं वो उनमें से एक इंसान था जो देखने गया इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल. तो प्लीज 2 मिनट साइलेंस फॉर मी. क्यों साइलेंस? पाकिस्तान तो हारी ना. ठीक है, अभी तू इंग्लैंड जीत पर तू सपोर्ट कर रहा है. बाय द वे, इंडियन फैंस इतने बदतमीज लोग हैं ना लाइफ में, क्योंकि आधे इंडियन आए होते हैं हमारे जैसे जिनके टिकट नहीं बिके, और
वो लोग सब भाई हर 4 जा रहे हैं. इंग्लैंड के टोटल 15 फैन होंगे, ठीक है, स्टेडियम पे. मतलब बहुत कम इंग्लिश सपोर्टर्स, ठीक है, कि बाकी सब लोग ऑलरेडी कतार के लिए निकल चुके थे, जितने भी लोग स्पोर्ट देखते हैं इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में. तो भाई वो मतलब हर 4, इंग्लैंड के हर 6 पे इंडिया का झंडा लेके आए. बाय द वे, इंग्लैंड पाकिस्तान के फैन में मैच में झंडा लेके आए इंडिया का, और इंग्लैंड 4 मारी है तो पाकिस्तानी फैंस के आंख में देख के ऐसा झंडा कर रहे हैं, ऐसा. और तू कह बहुत रहा ही था embarrassing. इन कॉन्ट्रास्ट द पाकिस्तानी फैंस वर मच बेटर बिहेव. बहुत तमीज आए थे यार. मुझे थोड़ा मीम टाइप लगा हो. मुझे लगता था कि यार पाकिस्तानी हम लोग को ऐसे ही दिखाया है इनको कि कुछ तो कि ऐसे तमीज से बात करते हैं, बहुत ही ऐसा लहजे में बात कर, जो भी उसको बोलते हैं. पर यार वो लोग सच्ची में आप ऐसे ना करें, ऐसे करके ही बात करते हैं वो लोग जेन्युइनली. मतलब वो मैं सुन ही रहा था और वो ऐसे ही लग रहा था. बहुत काफी फनी मोमेंट. बट एनीवे, Pakistan is close to us than England, as Mr. Pink has said that. On ट्रू. that यार note, मिस्टर पिंक ने इतना लिखा है यार, मतलब oh आई fuck, रियली, sorry. मतलब ही इज अनुपम खेर रियली. की बेटी नहीं है, सैटरडे नाइट को नींद, नेपोलियन वर्सेस चर्चिल, किसान आंदोलन has scored ईशान किशन को किसान आंदोलन लिखा है. किसान आंदोलन has scored 210. Cinephile has said we should be consistent. Yes, we will be. अभी से कंसिस्टेंट, अभी से हर हफ्ते, ठीक है. ये अभी हम लोग प्रॉमिस ले रहे हैं, जब तक एटलीस्ट 100 तक कंसिस्टेंट करते हैं. क्या बोलते हो? श्योर. गारंटी. Guarantee. कागज हो जाए फिर. चलो. अच्छा, शिखर धवन को recommendations. बाय बाय. शेखर धवन लिखा है वैसे इसने. शेखर धवन को बाय बाय. शिखर धवन बहुत ही मस्त इंसान लगता है यार मुझे खाली वो हाँ. वाइब्स के लिए चाहिए टीम में. मुझे खाली वो उसको खाली वो करने के लिए, वो जो करता है हाँ, ना, ये जो करता है. थाई फाई करता है, मेरे को उसके लिए वो खाली टीम में चाहिए. और कोई Anyway, भाई शोएब अख्तर इज recommendations. द कल्प्रिट. ओके, चलो चल recommendation. ये चलते रहेगा भाई पूरी रात. रिकमेंडेशन क्या है तुम्हारे? मैं अभी भी सोच रहा हूँ मैंने क्या देखा है. तुम लोग तब तक कंटिन्यू करो ना, मैं सोचता हूँ एक सेकंड. यार यार मैंने जेन्युइनली कुछ भी ज्यादा कंज्यूम नहीं किया कंटेंट वाइज. Oh fuck, I'm reading a book I want to talk about. हिमांशु जब तक तू बोल. यार एक हफ्ता हो गया या दो, like around last week I watched a movie and it's a very well known movie, Jim Jarmusch की. It's Hmm. called Patterson. Hmm. तो Aditya, have you seen it? Not yet, but I want to watch. I want to do a full Jim Jarmusch marathon once. So I have seen a couple of other films also, and this one na is very different from his other movies, and I really liked it. Patterson is one film. I don't know how it's one of those mundane movies which have become more special than movies which have something to say or have a more valid, like a more heavier plot. So I feel like Patterson is a film maybe you guys should watch. I watched it. Bharat ने तो देखा It's a है. beautiful Aditya, movie. it's something else only. It's like it's done very well. There is I'll watch it. nothing happening in the And film, and I that's the best part. would say that it's very Jim Jarmusch. It's not different from his rest of his film. Uski ek one of his best films according to me is fuck, I forget. Way of the Samurai. What is that movie? Top Dog. Some dog. Wait. Somebody in the chat will tell us. Wait. But that यार movie, it's मैंने very similar. हाँ, it's कौन सा very जॉनी similar. डेप वाला है? नहीं, जॉनी डेप तो डेड मैन है. डेड मैन वाली एक और है जो बहुत ही सिमिलर है. But anyway, fine. I felt it was very much his style, yeah. Very meditative. Nothing much happens. So the ones which I Philosophical. have seen are not. Maybe they are the different ones because I Which saw the ones? Dead Don't Die, and then I saw his Only other Lovers. one, Only Lovers. Only Lovers, and then Only I have Lovers seen is beautiful. Yeah. and But then that I've is a seen different one kind of. called the one which is black and white and it's about prisoners breaking out of a prison. Oh It's called- yeah, I've heard so much about that. मेरे को इसके लिए मैंने देखी नहीं है उसकी पुरानी वाली, पर मुझे देखनी है. मैंने हाँ, उसका I बहुत हाँ, सुना है, Prisoners वाला. लोगों ने बता दिया. Whittaker film, the samurai film. It's basically Forrest Whitaker playing a samurai. In all seriousness, it's very good. Oh But fuck, anyway. that's a very crazy dude. Yeah. Forrest Whitaker. It's called Ghost Dog: The Way of the Samurai. Forrest Whitaker is the opposite. Like samurai, when I imagine a very skinny, lanky. Yeah. This is the opposite version. And it's not played for laughs. Just
just saying, it's damn. actual. Like he's an actual samurai. He's a modern day samurai. He believes in samurai, and it's very nice. It's very very interesting. Anyway, but yeah, this. तेरा क्या recommendation था भरत? Yeah, ये book है. Patterson था और तूने एक इसकी भी. ये किताब मैं पढ़ Anita रहा हूँ. Anand. Oh, I can give a recommendation around this for sure. हाँ. Yeah, this is fucking beautiful. I've read this much. Is her grandfather was at Jallianwala Bagh? Yeah. No? Yeah. And in fact, the foreword is mentioning, and I posted this on my Instagram because the foreword is amazing. It says, "For my mother and father, and in memory of my grandfather, Ishwar Das Anand, no guilt in survival. I wish I could have told you that." Because apparently he died of guilt. Yeah. He never recovered from the guilt of having survived Jallianwala Bagh. So it's very interesting. So yeah, this basically, sorry, just a little bit about this book. Yeah, go on. This basically follows the lives of all the people involved in not just the Jallianwala Bagh incident, but also Udham Singh and his life and everything. And if you've seen Sardar Udham, you will appreciate this even more because this fills the gaps that the film sort of leaves. And his life actually is very sketchy. And all the photos this is the most remarkable thing about Udham Singh's life. All the photos that you see of him are different from the others. So you can't tell him as one person in any of the photos. And there is very little, precious little that people know. For example, people don't know what happened to his brother. He basically just passed away. Nobody really knows how. So, and he was also, not many people know, he was from the untouchable caste. Oh. So, yeah. So there's also that element. Also, he was a war veteran at 19. He had been to the First World War twice at the age of 19. And he had survived. So there's a lot of interesting. इस पे भी कभी बनना चाहिए कुछ जो मुझे लगता है सरदार उधम से different film बनेगी. But yeah. Mr. Ping has said Shurjit Sarkar did good with Sardar Udham. Yes, he definitely did, and we discussed it on the podcast also. Cinephile has said Down by Law. Yeah, that's the Jim Jarmusch movie about the prisoners and all that. I would actually like to recommend something very similar, which involves the author of this book, actually, Bharat. It's a podcast. It's called the Empire Podcast, which has Anita Anand and William Dalrymple. And अगर आपने The Anarchy book नहीं पढ़ी है, और मैं बहुत highly recommend करूँगा that you read The Anarchy. Not even if you're not interested in history, it's just written so well. It is fascinating. So the two, Anita Anand and William Dalrymple, basically वो book से ही काफी कुछ है उसमें, and general conversations around the British Empire and all that stuff, and the East India Company. So I would like to recommend that. And I would also like to recommend, because मुझे एक funny ख्याल आया जब भरत ने कहा कि her grandfather died by guilt. और मैं recently एक joke सुना relating to something about this on Shashwat Maheshwari, who's a comic, been on this podcast. He also has his own podcast, Number One Bullshit, which you recommended. But he has recently put out a stand-up clip on YouTube called Chess by Shashwat Maheshwari. And it's a very, very, very funny clip. So please go check that out also. बहुत ही सही है. अगले हफ्ते, guys, Decision to Leave has released on Mubi. All three of us have seen it anyway. Let's try to do it next week. I think it'll be fun because I'm dying to talk about that movie, kind of. I'll watch it again also. It's very good. मैंने आज डाउनलोड किया, मैंने देखा नहीं है. सॉरी, डाउनलोड किया. आज मूवी से तो नहीं मिलने वाला हमको. आज मूवी का सब्सक्रिप्शन लिया मैंने. अरे तुम लोगों को लगता है हम लोगों को स्पॉन्सर्स को अप्रोच करना चाहिए, जैसे कि मूवी करना तो चाहिए. But anyway, chalo, with that we can end the stream, and thank you for joining on this episode, and we'll be back next week, I hope. Bye bye.